Good afternoon, dear students. Myself, CS Megha Goyal, welcomes you all for the today's first LBC class for Paper 2 Business Laws at the foundation level. First of all, congratulations for joining this prestigious CA course. After becoming a chartered accountant, you will surely reach to the heights, and this CA course will change your life to positive. But keep one thing in mind keep one thing in mind that the CA course require two things from you. One thing is focus, and second, just believe in yourself. Okay, whenever you wake up in the morning, just say that I am a chartered accountant and I will be a chartered accountant. So, this focus and this strategies, positive affirmations, create a positive change in your mind as well as in your body. Dear student, there is only one person who can help you in clearing this CA course. You want to know who is that person? Yes, this person is only you and only you. From many students, you have heard that entry in CA course is easy, but exit is tough. This statement is entirely wrong. This statement is not correct. Yes, we know that when you clear the foundation, the level of toughness increases. Like the foundation, you will reach to intermediate, the level of examination will tough, and then in the final, it will be level of examinations level and your preparation, it will increase. But this does not mean that you will not clear your CA final course. You will not get your degree. This is not correct. Okay, like CA, you just compare your preparation. Dear students, one query I received from Rudra that I am not audible. Please say that I am audible or not. Please confirm. Yes, Rudra, many students have written that I am audible. Please connect again. Maybe there is some internet issue at your end. Okay, Rudra? Yes, I was on the statement by many students like entry is easy, exit is tough. This statement is incorrect because I know that as the you are in going to the further levels, the level of examinations will increase. But that does not mean you will not clear your CA course. Okay, CA course is like a ladder. You have to take one step at one time. Okay, you are at the first step foundation. So we request you that just at this time, just focus on the foundation. Just focus on the first step. Don't see at the top. Okay, you will surely and gradually reach to the top slowly and gradually. Okay, and today's session is introductory in nature. We will not take the technical topic from today. We will take the introductory lecture like what about the paper, how is the paper, guidance about the paper pattern, what are the various publications of the BOS. Okay, how to study the law paper, how to practice the questions, what type of questions do come in your examinations, and many other related queries we will entertain in this lecture. Okay, if you are having any queries, you can send to me. But from 29 September, like Monday, we are having the technical sessions from chapter 1, that is the Indian regulatory framework. So topic wise query we will take from Monday. One more thing, that this entire LVC classes for this paper 1, 2, 3, 4, which has started today, is for January 2026 examinations, and the date sheet for the same has also been released from the examination. And you all must be aware that January 2026 examinations are going to start from 18th January. So overall, if we see, we will see that around 3.5, 3.5 months are available with you. So we have to take the utmost benefit, most benefit of this 3.5.
months we have to study also, we have to revise also, so that we can clear our CA foundation course in January 2026. The mode of these lectures will be entirely in English, but wherever, if any student is having any difficulty in translation, they can tell us. We will translate the subject, we will translate the matter in Hindi also, so that all the students can take the maximum benefit from these lectures. Okay, now we are starting with our PPT. I will surely take each query of you, but just concentrate here first. Just listen to this PPT, because I can guarantee that 80 to 90% of your queries will be resolved after having an interaction, after looking at this PPT. Okay, if I am seeing that any query is not covered in my PPT, I will surely date, but at the end, or between after half an hour, we will take the queries. Yes, I am assuming that you all have become chartered accountants. So you all are future chartered accountants for me. Please keep this thing in mind. I am reiterating this point, that always in your mind, when you wake up, or minimum 3 times, like some students take medicines. If you are having fever or cough, 3 times medicine, okay, in a day. You say 3 times in a day that I am a chartered accountant. I will be a chartered accountant. Okay, you will see the difference definitely. Yes, one more saying, because to make you motivate, to make you positive, that your future is created by what you do today, not tomorrow. Okay, so we have to do a lot of hard work and smart work from today only. Just do not postpone things, that yes, I will do this topic later, tomorrow, I will study tomorrow. No, don't let this approach, don't follow this approach. Just do whatever you are teaching LVC in the LVC, whatever the faculties are telling you, just follow the same day. Okay, try to cover all the LVC class from all the papers, paper 1, paper 2, paper 3, paper 4. If any class, you missed any class, then it will be a problem, because then it will be a backlog for you. Okay, so just try to watch, view every live class of this LVC. And if by chance you, because due to some reason, you are not able to see the live virtual class, live virtual, then you can see the recorded, but try to watch the same on the same day. Okay, yes, मिस्टर मोहम्मद जुमेर इज सेइंग, मैम थोड़ा बहुत हिंदी में भी समझा देना प्लीज। मैंने इसीलिए कवर किया कि आई एम नॉट यूजिंग वेरी टफ इंग्लिश, ओके, आई एम यूजिंग द सिंपल इंग्लिश, बट वेर एवर the student is asking, that some students are from region that they do not understand Hindi medium students, so I will cover the topic in Hindi as well. Okay, yes. सयन मन्ना इज सेइंग, मैम ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मैम कोई स्ट्रेटेजी बता दो और टेक्निक बता दो। सयन, don't say that this is your second attempt. Maybe in one attempt you are not able to clear, but please keep this in mind, that this is your first attempt. And see my lecture, I will tell the strategy, I will tell all the students that how to prepare the business law. Okay, how to prepare for the business law and how to practice the questions. Okay, yes. Now we are starting. You must all be aware that business law paper is entirely of 100 marks and descriptive questions. Descriptive means no MCQ will be asked in this paper. Okay, 100 marks paper, entirely descriptive. You have to read the questions and you have to write the answers. No OMR sheet, no MCQs. Yes, the syllabus of business law has been divided into 7 chapters. Okay, first chapter is Indian regulatory framework.
Second is your Indian Contract Act 1872. I will brief you one by one that what are these chapters and how to study these chapters and what are the weightage assigned for these chapters. Okay, so please listen to me carefully. This whole session is very beneficial for you. Just follow the advice given by me, or you can change the advice, but just follow that strategy, whichever suits you. But we will tell you how to study and from where to study. Yes, Tia, these classes will complete all the syllabus. The schedule of the LVC class has already been uploaded on the website. One more query students is asking me that, ma'am, how to join through Zoom session. Okay, from through for the Zoom session, you have to log in the BOS Knowledge Portal with your registration number, date of birth, and your date of joining. Okay. Once you join in the BOS Knowledge Portal, there is a link. There is a tab in the left hand side that join LVC class January 2026, and icon new is coming on it because these are the classes. This is the new icon only released today. So new is written. Just click on that tab. Inside that tab, there is two more links. Join. First is join Zoom. So then you can join through that. You will automatically come in the live Zoom classes. Okay. Mohammed Ansari, we cannot provide you meeting ID and password. I told you the way how to join through Zoom classes. Okay. Some student is saying that audio and video are not connected. Please write to me that whether there is any issue or only one student is facing that problem. Please write to me. गुड मैम यस नो इश्यूज जो भी जिसने भी अभी मुझसे क्वेरी पूछी थी प्लीज बेटा कनेक्ट अगेन मे बी देर इज सम इंटरनेट इशू बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर सेइंग देर इज नो इशू विद द ऑडियो एंड वीडियो ओके नाउ कमिंग टू द स्लाइड first chapter is Indian regulatory, second is our Indian contract act. This whole chapter is very important because this is comprising of 9 units. Okay, then chapter 3 is your Sales of Goods Act 1930. Your chapter 4 is your Indian Partnership Act 1932. Then these two topics, the LLP Act 2008 and the Companies Act 2013, we are covered at the foundation level also, and it is covered in the intermediate also, because these are the foundation introduction we have covered in this, and the rules and regulations of these acts and the further analysis of these acts we have covered in the intermediate, and Companies Act 2013 we have covered in set A, self-paced corporate and economic laws paper also. So Companies Act 2013 we have divided at 3 places: one at the foundation, second in intermediate, and third at the self-paced set A module, because this is very important legislation. This administers the companies of India, okay? And some companies incorporated outside India. So this is a very important. All the chapters covered in the business law paper are very important. Many times, students asked me that, ma'am, whether I can skip a chapter. Just keep this thing in mind, okay? That in CA course, there is no selective study. Specific study is not allowed. You have to read the entire syllabus, because the strategy is this. One student was asking, this is one of the strategy that I have to attempt full 100 marks paper. If I leave one chapter, surely I will miss 10 to 12 marks or maybe 6 marks out of 100. So we do not have to adopt that policy. We are reading all the chapters covered in our syllabus, and we are doing 100 marks paper in our examination. Just keep this thing in mind. Yes, the last chapter is Negotiable Instruments Act 1881. This is also very important, and last 1 year it was added. Okay, now coming to
the details of this chapter. Yes, this is the section wise weightage, because this section wise weightage is very important. We can frame our mind that yes, the weightage of this chapter is this, so I have to give time according to the weightage. The weightage is less, the less time is there. If the weightage of that chapter is large, is more, okay, so we have to give more time to that chapter. Okay, so chapter 1, Indian Regulatory Framework. The weightage assigned for this chapter is 0 to 5%. 0 to 5% means around 6 to 7 marks का जो क्वेश्चन है वो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में से आता है. ओके, व्हाट इज दिस इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क? इन दिस, अभी हमारा पेपर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ अवर पेपर? इट्स बिजनेस लॉ. सो लॉ, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेज? लॉ क्या है? लॉ कहाँ से बना है? ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ. व्हाट इज द प्रोसेस which these all things, like enforcement, once we have made the law, it is notified, then how the law is enforced, कैसे उसको implement किया जाएगा, कैसे उसको enforce किया जाएगा, and types of different types of law, like criminal law is there in India, like civil law is there, principle, okay, so many common law is there, so many laws are there. We have covered just introduction of all these things so that it is beneficial for you in the further levels. Type of ministries, because once you become the chartered accountant now, you will have to deal many ministries, and in the intermediate also, in the foundation also, many amendments are come in the law paper, in income tax. So we have to be aware that from where we can see the amendments portion. So from now, from foundation level only, we have knowledge, we should have knowledge about the various ministries and what are the roles of that ministries and what amendments are available in that. Okay, so for that purpose we have covered limited 5 to 6 ministries in this paper, like Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, SEBI, RBI, IBBI, Ministry of Law and Justice. All these ministries are very important for CA professionals. Okay, so we will inculcate the habit of surfing these websites from this level only. Yes, done with chapter 1. I told you that 0 to 5% weightage is there. That means 6 to 7 marks question. One question come from this chapter. And this is a very easy chapter. Around 10 to 12 pages are there. Okay, so the lecture of this chapter will be on Monday. So please attend. Do not leave. Do not skip your 6 to 7 marks. Every single mark is important in CA profession. है ना? Yes. Yes. Chapter 2nd is your Indian Contract Act 1872. As I told you before, that this is very important. Very important. Why? See, this weightage, 20 to 30% weightage, means around 30 to 34 marks questions out of 120. I will tell you how 120. I think all of you must be aware that one choice is also there. Okay, so entire question out of 6 questions, you have to attempt any 5. That, and every question is of kitne marks? Is of 20 marks. So that means our entire question paper will come of 120 marks, and out of that we have to attempt 100 marks. That means इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो वेटेज अगर हम देखें तो इट इज 30 to 34 मार्क्स आउट ऑफ 120, 20 to 30%. So seeing its weightage, this is very important. Okay, and in this chapter there are 9 units.
9 separate chapters. We have covered 9 separate chapters for this entire chapter. Okay, unit number 1, 2, 3, 4, 5 until 9. So in this chapter we are covering the general principles also, general contracts also, like 1 to 75, and special contracts also 125 to 238. Okay, like what are the general contracts, we will understand it later in our technical sessions, like what is contract, consideration, essential elements of contract, and how the contract is performed, and if the contract is breached, then how we claim the damages. Okay, and what are the contingent and quasi contracts. These topics are covered in 6 units, and further 3 units like special contracts are contract of indemnity and guarantee, contract of bailment and pledge, and contract of agency. This is also covered in Indian Contract Act. So this is the entire syllabus of your Indian Contract Act 1872. And this is a very important, very interesting. Why? Because this is the base, this is the foundation that how the contract is formed. Because जहाँ पे भी आप जाते हो, you see, whenever you are going to the hotel, whenever you are going for the job, you are going to the school, whenever you are going traveling by bus, train, helicopter, aeroplane, everywhere we have to follow certain rules and regulations. So everywhere there are some agreements and contracts we have to follow. Some are expressed contracts, some are implied contracts. Okay, like you are going in the through train, some coolie comes and he picks up your luggage, but you did not deny him. Okay, that means you are accepting the coolie to pick your luggage and drop you in the train. So this is one of the implied contract. You have to pay to the coolie. Since you have not said him, you have not told him to pick your luggage, he has come, but since you have not denied him, this means that you are accepting the services given by coolie, and you have to pay the fees, you have to pay the remuneration, जो भी whatever the जो भी आपका payment बनेगा, you have to pay to the coolie. So these everywhere the contract act is arising, is present. Okay, so it is a very important, very interesting, and the examples you will read now, you will see that yes, जैसे मेरे साथ हमारे साथ daily day to day basis पे we are facing the same issues. ओके आपको कोई वॉच मिला है, यू हैव गॉन समवेयर ऑन द रोड, यू आर गोइंग, यू फाउंड सम वॉच, तो व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज in the case of lost and found items? So this all are covered in our Indian Contract Act 1872. Okay. Third chapter is the Sales of Goods Act 1930. This is 15 to 20%. See the weightage we are giving, it's very important. Around 20 to 22 marks का जो पेपर है सोगा में से आता है. सोगा मीन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ये दिस सेल is also one of the special contract. Earlier the transactions of sales are covered in the Indian Contract Act, but later in 1930 the separate act is prepared, is formed, the Sales of Goods Act 1930, and we are covering 4 units. 4 separate chapters are there. Okay, 4 chapters, separate chapter, and there is an agreement between buyer and the seller, and we will cover that formation of the contract of sale, that how the contract is made, what are the conditions and warranties. Like if we are going to buy something, there is always a warranty. Okay, so we will see that yes, what are the conditions, what are the warranties. Transfer and delivery, कि if जैसे मैंने परचेज किया तो ये ट्रांसफर माना जाएगा. जैसे आई हैव गिवन माय कार कीज टू समबडी एल्स, आई एम सेलिंग द कार, but instead of car is parked in my parking, I have given the car keys. So what type of delivery will be there? These all types of topics we will cover in this unit: transfer of ownership and delivery. Unpaid seller in his right. I have sold my goods to someone, but he is not paying me. He is not giving the price.
then I will be unpaid seller. Then what are the rights available to me? मेरे क्या अधिकार हैं? ये सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे. तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ना वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यू आर डीलिंग विद दीज एक्ट्स ऑन डे टू डे बेसिस. ओके, तो आपको भी पता चलेगा कि यस, अरे ये तो मेरे साथ, मेरे को पता ही नहीं था, ये मेरा अधिकार है, दिस इज माई राइट. What the Contract Act says, what are the Sales of Goods Act says. So you will get an idea about all these transactions which we are dealing in day-to-day basis. Yes, give me 1 minute. Because so many chats are everyone option, and many students are chatting between themselves. So I have, some students are asking ki disturb, class is being disturbed because chats. So I have changed the mode of the chat, because now the chats will not be visible to everyone. I think that will not be a problem to the issue students, and now they can focus more. Anjana, Vidya, Ajay, all students are chatting in between. Dear students, I am here for you only. Okay, so please do not discuss in between the class. Just focus. I am here for you only, students, so that you can clear your foundation course easily. Now you are not able to see. Just tell me, everyone, you are able to see the chats of everyone or not? Please reply. Yes, now you can focus more. Yes. Chapter 4 is Indian Partnership Act 1932. This is Chapter 4, Indian Partnership. In this, partnership क्या होती है? When two or more persons are formed for some business activities. Okay? Like हम देखेंगे अभी इसको डिटेल में. So partners are formed, two or more partners are there. So we will deal that what is partnership, who are partners, what are the rights and relations between the partners and the firms, how the partnership firm is dissolved, what are the consequences of non-registration, since the partnership firm is optional, registration is optional, it is not compulsory to register the partnership firm. Okay, so this general nature and reconstitution of firms, while if we are introducing one partner, so then the firm is reconstituted. If the one partner is died, if the one partner is retired, if the one partner is expelled, expelled means usko nikal diya. So all these things are covered in this partnership. Number of units, 3 units. Okay, weightage is 15 to 20%, means 20 to 22 marks. Very important, बहुत ज्यादा है ना? 20 to 22 marks are covered from the Indian Partnership Act 1932. 3 units are covered. So we will see this is very interesting, because on that basis your LLP and the Companies Act form. LLP अगर आप पढ़ोगे तो LLP is a mixture of partnership and corporate. So Indian Partnership Act forms the basis for LLP also. Just 1 second. Yes. Moving to chapter 5, that is the Limited Liability Partnership Act 2088. The 5 to 10%, that means only 1 marks question, 6 to 7 marks. Since the marks are less, but do not skip this chapter. This is very scoring, very interesting, and the
further levels you will discuss in the foundation, in the intermediate level. Okay, so limited liability partnership क्या होती है? The LLP is a form of you can say LLP, where the both the type, like partnership, you can take the benefit of the partnership also, and you can take the benefit of Companies Act also. That means you can take the benefit of corporate also, and you can take the benefit of partnership. Okay, the liability is unlimited. Okay, like in the case of partnership, but in the case of companies, the partnership, अभी we will see in detail. अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या मैडम बोल रही है, but अभी आप समझो LLP is a mixture of partnership and the company. Okay, it enjoys both the benefits. So introduction, nature and scope, essential features, क्या क्या features हैं, characteristics, why it is beneficial. ओके, एलएलपी बनाने के क्या क्या फायदे हैं, इनकॉर्पोरेशन, हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट अ एलएलपी, एंड डिफरेंसेस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होंगी आपकी? वन तो पार्टनरशिप, सेकंड कंपनी. ओके, तो इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन एलएलपी, बिटवीन पार्टनरशिप, बिटवीन कंपनी. Yes. Chapter 6 in the Companies Act 2013. This is the very important, because once you become a chartered accountant now, you will see that this is the one of the major act, like income tax also, GST also. This is very important. Okay, it administers the companies, है ना? कंपनीज जो हमारी इंडियन कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है, डोरमेंट, एसोसिएट, स्मॉल कंपनीज, सो मेनी टाइप ऑफ कंपनीज. सो ये सारी कंपनीज क्या होती हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स? ओपीसी, वेरी बेनिफिशियल टाइप ऑफ कंपनी. वन, आजकल लोग बहुत बना रहे हैं ओपीसी, वन मेंबर कंपनी. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओपीसी? ऑल these थिंग्स वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर. व्हाट इज अ कंपनी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, दैट मैंने अभी आपको बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ओके, देयर आर सम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. All these things will give a guidance that yes, this is the Companies Act, and major portion we will cover in intermediate. The weightage, there is no unit, there is only one chapter. So आप इसके साथ एक एनालिसिस कर सकते हो. There is no units, only single chapter, and the weightage is same, 15 to 20%. किससे सेम है? इंडियन पार्टनरशिप and SOGA. But if you compare the number of pages now, you will see that length of the Companies Act 2013 is less as compared to SOGA and partnership. But that does not mean you are skipping SOGA and partnership. We don't leave a single chapter, but I am just comparing the importance of this chapter from the examination point of view. 20 to 22 marks, no unit, single chapter. ओके, आप इसमें देखोगे आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि या नई नई चीजें, स्मॉल कंपनी क्या होती है, व्हाट इज वन पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी. बिकॉज अब प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के साथ साथ उन्होंने अंडर प्राइवेट कंपनी के अंडर बहुत सारी कंपनीज बना दी हैं. सो आपको पढ़ के इसको बहुत मजा आएगा. जस्ट just attend the LVC classes and read from the study material. Yes, the last chapter is our Negotiable Instrument Act 1881. The weightage is 10 to 15%, and the marks is 12 to 14. It can vary between 12 to 14, and no unit is there. Single chapter in which we will cover that what is negotiable instrument. There are three kinds of negotiable instrument, like bill of exchange, promissory note, and check. Okay, so how these are formed, how the essential features of these three kinds, then how the negotiable instrument is being made, the manner. ये तो अभी आपके क्वेश्चन अभी सितंबर 2025 एग्जाम में आया था कि द मैनर बताओ, द मैनर इन विच द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज मेड. 7 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल. ओके,
Then presentment, कि how we can present the instruments, rules of compensation. तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है. One thing that many students ना बोलते हैं कि मैम लॉ इसको इज अ थ्योरेटिकल पेपर, ठीक है. तो लॉ के पेपर के लिए वी हैव टू फोकस मोर ऑन presentation of our answers, कि how we are presenting our answers ना. So our entire journey 3.5 months की जर्नी हमें बिजनेस लॉ के लिए जो हम करेंगे साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स, तो हमें अपने आंसर्स को ब्यूटिफाई करना है. वी हैव टू ब्यूटिफाई अवर आंसर्स so we can present in that manner that the examiner, the paper checker is giving us marks only. He is not deducting any marks, he is giving marks. Okay, so first prerogative for this paper is presentation of answers. For that, you have to do a lot of hard work. You have to first read and memorize, then practice. I will tell you how. Yes, this is very, very important slide for all of you. Resources to excel in exam. That what are the resources? I told you na that I will brief you about the various publications of BOS academics, that we are prepared. We have so many publications, and many a times at the end, students came to know about these publications, but you are at the benefit. I am telling you in advance only that these all are publications, and these publications are not only for paper 2. These all publications are there available for all the 4 papers. Okay, so please follow these resources in your exams, and I can definitely assure you that if you read all these documents, and mostly of all these documents, and or if you read all the publications, you will definitely clear your examinations. Okay, the first is live virtual class. That today is our live virtual class. Okay, so first of all, first resource by BOS. This is free of cost. You can join anywhere. I will give you details, further details in the coming slide also. So live virtual class is the first resource given, provided by BOS Academics. Second is study material August 2024. मैनी अ टाइम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि मुझे कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करना है. Which study material? So you have to refer the August 2024 study material like this, ये वाला. Okay? स्टडी मटेरियल मिस नहीं करना है. स्टडी मटेरियल इस आपके लिए बहुत जरूरी है. नॉट फॉर पेपर 2, नॉट फॉर फाउंडेशन, फॉर Recording in this is progress. the additional resource. You can refer the Saransh. So this की अभी स्टूडेंट ने किसी ने मेरे से पूछा था कि what is the way of preparing notes. You can prepare your notes or you can refer the Saransh for notes purpose. Okay. Revisionary test paper RTP. Every examination RTP is released by the Board of Studies Academics. बोर्ड में जाते हो 10th and 12th में, you have to do lot of sample papers na. So like in this manner we have prepared a model test paper in which 10 sample papers, 10 model test papers of covered for all the 4 papers. ये सब क्यों करना है? Why we do lot of we do all the this publications? Because this study material is for reading and Saransh, but how to practice? मैंने आपको बोला ना, how to read and how to practice. Practice part we will deal from RTP model test papers, because as many questions you will practice, your concepts will be clear, and similar types of questions are coming. Similar types of question may come in your examination. Your concepts are clear, you know how to deal that question. So it is better to refer these publications so that you can attempt the answers easily in your examination. Okay. मई 2025 में धैर्य कोई बुक नहीं आई है. जो मटेरियल है अगस्त 2024 का है,
रीप्रिंट एडिशन आपका हो सकता है, रीप्रिंट आपका May 2025 हो, देन यू कैन रेफर दैट मटेरियल. बट मेन एडिशन जो है दैट इज August 2024, you can refer the May 2025 reprint edition. It is again reprint in July 2025, July 2025. So you can refer any of the reprint edition, but the main edition should be August 2024. Beta, WhatsApp, Harpreet Kaur is writing WhatsApp link. WhatsApp group is not existent. The Telegram group, we have shared the link. We have to share. We have shared. Yes, we have shared the Telegram group in the chat box. मैम मेरे पास जून 2024 एडिशन है. नहीं, जून 2024 नहीं चलेगा बेटा, अगस्त 2024. प्लीज टेल मी द अगेन द वेटेज ऑफ चैप्टर 3. चैप्टर 3 की वेटेज बेटा 15 to 20% and 20 to 22 marks paper come from chapter 3. If any student has skipped some part, they can see the recorded lecture again. There is no issue in that. How to get the study material online? Study material online, you can see the CDS portal. अप्रैल 2023 बुक नहीं चलेगी बेटा, इट्स वेरी ओल्ड एडिशन. ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 3 hours. So many queries. Telegram link I will again repost it in some time. Not to worry about that. In every class I will share the Telegram link. So not to worry. Yes. Almost all the queries. Ma'am, can you shift the class in evening? No, beta, we cannot shift the class. If you are having any problem in attending the live class, you can see the recorded classes. Okay? Saya Manna. Yes. Almost all the queries I have seen. September 2025 book. Yes, ये आपका reprint edition है. ये चलेगा. बेटा स्टडी मटेरियल के लिए यू हैव टू कॉन्टैक्ट द CDS डिपार्टमेंट. ओके. Writing practice, yes, I will do the writing practice. I will the entire, we have 36 to 37 sessions for over this. In every lecture we will do lot of practice. Okay, so do not fear that yes writing practice कैसे करेंगे. We will in every class discuss minimum 5 to 6 questions in every class. Okay, so almost all the queries. चैप्टर नेम ऑफ 3. बेटा चैप्टर नेम 3 आपको पता होना चाहिए. इट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. मैम गुजराती मीडियम से ही लॉ कैसे करूं? बेटा देर इज ओनली 2 मीडियम्स CA में, इंग्लिश और हिंदी. तो आप ये देखिए कि आपको इंग्लिश और हिंदी में से कौन सा मीडियम ऑप्ट करना है. हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स? यस मैम, स्टडी मटेरियल इज इनफ. Yes, study material is enough, but along with the other publications which I am sharing with you right now. Okay, Ujjwal. Rini is asking, Rini ने क्या क्वेरी भेजी है? दिसंबर स्टार्टिंग में खत्म कैसे हो जाएंगी बेटा? You are December starting में. Yes, these classes are going to finish on 5th or 6th December. Okay, so after that we will do webinars
and success at CA examinations so that your entire syllabus will be finished in December first week. Okay, Riya? Rini? बेटा सिलेबस हम 2 महीने में नहीं कवर करा रहे. वी आर कंप्लीटिंग द सिलेबस द सेम. द रिनी इज आस्किंग कि सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट मत कराओ. नहीं बेटा, हम 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं करा रहे. हम सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट करा रहे हैं फ्रॉम सितंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर. 3 months. Slowly and gradually we will cover every topic, but simultaneously you have to complete your reading from the study material and your practicing portion. Please do not depend only on these classes. Okay, after finishing these classes like 11 to 1 you will take the break. 2 to 4 you will attend the class, and before 11 you have to study, and after 4 you have to study. Okay, so you whatever we are teaching in the LBC class, you have to read the same on the same day. You have to read the same, you have to memorize the same, you have to practice the same. Okay, अगर आपने एक भी दिन पीछे चले गए तो you will be at loss. कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा. Yes ma'am, all right, thank you for the clarification. Yes. Who to write LA? ये क्या होता है दीपक? स्टडी मटेरियल के लिए आई एम टेलिंग मुबारक CDS डिपार्टमेंट. आई एम रीडिंग ईच एंड एवरी मैसेज बेटा, डू नॉट वरी. Can we start studying for May attempt from now only from these classes? Yes, if you are giving your paper in May, you can join these class and take the benefit. You can, yes. कोई बात नहीं. Thank you, ma'am. Yes, Mubarak. Rini, query solved. Akshat is writing, ma'am, syllabus will be completed within how many months? Is it in within November? No, it will be completed by first week of December. Akshat, you have given your exam in September also, in May also. Okay, September, May, you will get, you will be passed now. So why you have want to join again? Business law paper. आपके पेपर अच्छे नहीं गए अक्षित? Recent telegram link, we will do the same beta at the end of the class. Your explaining way of information is too good. Thank you beta. Chalo. The same type of query I am receiving. So it's coming like this, ma'am, from past how to get a study material. So many queries from beta, just note down one mail ID, cdsonline@icai.in. Just mail this your concern to this mail ID, cdsonline@icai.in. They will reply you surely. Yes, please continue teaching. Yes, because similar types of queries are coming. We will, otherwise the time will exceed. Okay, model test paper. I was on model test paper, 10 sample papers. Okay, we have to practice. Then mock test papers. Mock test papers after finishing the classes in December 2025, we will have 2 series of mock test papers. Okay, mock test paper is the same. The examination format, like you are doing in the examination, the same format, type of format, like 6 questions, three parts. We will prepare the questions, and you can go to your nearest branch also. For this, you can give the nearest branch also, and otherwise, if you do not want to go to the nearest branch, you can download the paper at home, attempt, and after 2 days, the answers will be uploaded. Okay, so you can check the questions, your answers
with the answers given by the ICAI. Okay? Yes. Suggested answers. The schedule we will upload it very sooner, but right now just focus on live virtual class and study material. These two right now, present, September, October, and simultaneously practice from these. This will be released later. And suggested answers. Suggested answers क्या होते हैं? The suggested answers are the question papers of past year attempt, like May 2025, January 2025, September 2024, June 24. जैसे जैसे आपके previous exams है, the questions and answers provided by the ICAI. Suggested answers जरूर पढ़ने हैं हमें. Webinars. After once the live virtual classes are finished, we will have webinars of subject specific webinars, but try to resolve your all queries in the live virtual class only. But if while reading, if you are having any queries, so you can contact us also, and we will revise the syllabus. We will do a lot of practice in these webinars, subject specific webinars. So if any query is left with you, or any topic you are not able to understand, we will cover the same in the webinars. We will revise the syllabus, we will practice and query. These are very important. Success at CA exam. Success at CA exam क्या होगा? इसमें the faculty, board of studies like me, my colleagues will come, and before the examinations, just 10-15 days before the examinations, we will tell you the examination strategies, that how to deal with the question paper. Now, today we are dealing with the study material, how to prepare, okay, for the law, for the exam. But then we will tell you how to deal with the question paper. Okay, how to do the time management. Okay? Yes. First of all, live virtual class हम इसका benefits देखेंगे कि what are the benefits of attending the live virtual class, और हम कैसे देख सकते हैं what are the characteristics, what are the features of what benefits, what facilities these live virtual class provide to us. Yes. Join Zoom meeting for one-to-one interaction. I told you in advance how to join through Zoom. If any student is joining through YouTube, they can join through Zoom also. How? In the BUS Knowledge Portal, just register yourself. Then there is a tab for January 2026 LVC. Join through that, and in that there is a portal, there is a link. Join Zoom. You can join Zoom and ask your queries. Okay. Interactive doubt resolution. See, so many queries we have resolved, and we will resolve in future also. So it is the interactive, both way interactive. Okay, I can able to see your queries, and you are able to see my answers. Accessible anytime, anywhere. Okay, you can log in through mobile also. Okay, you can see the live classes, and if you are not available in the live time, or if due to some reason you are not able to join the live classes, you can see the recorded version. Within 5 minutes of completing this class, the recorded lectures are available. So it is accessible anytime, anywhere. Okay. Notes, assignments, MCQs. Yes, this is the very interesting feature of this. Like, this is my notes, which I am covering PPT in the form of notes. Okay. In the free coming classes, we will share the notes like PPTs के through हम पढ़ाएंगे. PPTs में we will try to summarize the study material in the PPT form. So this also will serve as the purpose as the notes. Some student was asking me that how the notes are prepared. For notes, you can refer the Saransh also, and you can refer the notes shared by the LVC faculties. This we will upload on the same BUS Knowledge Portal, from where you can see the live virtual classes. There we will upload the same. Okay, notes आपको class के time पे होंगे. In this, maximum questions are covered.
We will try to cover as many questions in the class only. Okay, so notes में भी आपके questions होंगे. Then after the class आपको क्या करना है? आपको पहले study में से you have to read the chapter. Then we will upload the assignment also. Assignment में क्या होगा? Homework. आपको भी तो अपना homework complete करना होगा ना? We will give you some questions for the topic which we have taught to you. Okay, assignment we will upload after the class, or even before the class we will upload the assignment. After attending the class, read it from the study material and do the assignment. We will discuss the assignment in the next class surely. Okay, this is the classroom teaching. Okay, so do not think कि yes बस मैम आई सर आए पढ़ा के चलेगा. नहीं, you have to do the homework also, you have to do the assignment also. MCQ, yes, MCQ हमारे, and every class we will do the MCQ, not in today's class because this is not the topic. From Monday onwards, in every class we will do as many as questions MCQ. अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम there is no MCQ covered in the study, in the examination. Why you are attempting the MCQ in classes? Because after attempting MCQs, concept is clarified. Once you will see now that all the options are closely related, the better you answer, the you are able to clarify your concepts. Okay, like we will conduct the quiz also. Like in our coming classes, Sudeep sir will come, Harleen ma'am is coming. So all the faculties, we will give you the quiz time. Okay, so you have to answer. This is not the way of classes that only we are talking. You also have to do a lot of hard work. Okay, so in every class we will do lot of MCQs and you have to answer them also. Okay, then exam centric approach. एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच मतलब लाइव वर्चुअल क्लासेस में हम इसी तरह पढ़ेंगे कि इन विच topic the time is, the questions are being asked more, we will give you more time on that topic. And like for example, Indian Contract Act is coming for 30 to 32 marks, so we have allocated 10 to 12 classes for the same. Similar, LLP only one class because only one question is coming, length of pages is very less. And we will do a lot of examination oriented questions. This notes and assignments, examinations में जो आपके questions आते हैं उसी तरह से we will do the questions here. Okay, and the assignments and notes में भी वही questions covered होंगे जो आपके examination oriented होते हैं. Guidance on exam preparation, what I am doing today. Exam preparation ना, कि how to get yourself prepared for the examination. हम ये classes क्यों कर रहे हैं? To clear the examinations. Okay, classes by distinguished faculty. We have so many distinguished faculty in our all the papers. Outside faculty, expert faculty. So their experience will be beneficial for you. Unlimited access to recorded lectures. I told you in earlier also that if you are, it is beneficial to see the live class. But if it is not available, you are doing some other work at that time, you can see the recorded lectures. Okay, so you have seen all the benefits, all the features of live virtual class. Now, study material. This is also very, very, very important. Because आप कई लोग कहते हैं ना, this is the Bible, this is the Gita, है ना, with whatever religion you are following, ये आपके लिए आपको पढ़नी ही पढ़नी है. ओके, स्टडी मटेरियल मैंने आपको बताया, दिस इज अगस्त 24. Reprint, it can be May 2025, it can be September 2025. Okay. Yes, study material में क्या है? We have given the text in the study material where learning outcome, first of all, the learning outcome is provided. What is the learning outcome? Learning outcome is that after reading the chapter, entire chapter, what will you gain? In the starting, you will get an idea that yes, after reading the entire chapter,
what topics I will understand, and what are the concepts. Chapter overview. In the starting itself, we have given some chart, diagram, in which chapter overview is given, like bifurcation, like Indian Contract Act में कौन कौन सी यूनिट्स हैं, हमने किस किस फर्दर यूनिट में, so that आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर्ड हैं. चैप्टर ओवरव्यू. स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इज फॉलोड इन ईच चैप्टर. स्टेप बाय स्टेप हमने वी हैव कवर्ड लर्निंग आउटकम्स, देन चैप्टर ओवरव्यू, देन वी हैव प्रोवाइडेड द टेक्स्ट. स्टेप बाय स्टेप हमने सारा प्रोसीजर वी हैव टोल्ड यू दैट हाउ द लॉ इज, व्हाट इज लॉ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ, हाउ द लॉ इज प्रोसेस्ड, the process of law, how the law is enforced, then what is contract, what is agreement enforceability. Step by step आपको it is an easy explanation of the entire syllabus which you can read at your own and understand. Appropriate explanation of the text through examples. If you see, around 500 to 800 examples are covered in our study material, and very easy examples, and many times some questions are framed on the basis of these examples. Everything we have covered in our study material in very simple language. You just have to read and memorize. Memorize क्यों करना है अभी मैं आपको बताऊंगी. Summary. In this paper we have provided summary in two ways. If you read the study material, open the study material, you will find that we have provided the study material in two form. One in simple text, and second is diagrammatic formation. Diagram से क्या होता है? It is easy to remember. Okay, so two summaries are given. Complete the chapter and at the end read the summary also. इससे क्या होगा? वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा. Questions along with their answers. At the end of the at the end of every chapter, we have provided the questions. We have provided the MCQ also and descriptive questions also. Descriptive questions are very important, because maybe if some questions come in, the same question come in your examination, है ना, और हमें राइटिंग भी तो प्रैक्टिस भी तो करनी है. So at the end, questions along with the answers, please do properly. Practice them. Read them. Okay, this is the study material. Very important. Yes. First, we have seen the LBC. Second, study material. Third is Saransh. Saransh, I told in advance that Saransh का हमने क्या किया है, what we have done, the Saransh, we have prepared the notes in the form of flowcharts, diagrams. Okay, so after reading the study material, you just refer the Saransh. Consolidated key concepts, छोटे छोटे concepts हमने उसको consolidate कर दिया है. Clear and concise overview. ओके, शॉर्ट में करके हमने उसको ओवरव्यू फॉर्म में दिया है, ताकि एक तरीके के इट विल सर्व एज द नोट्स. इंक्लूजन ऑफ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, टेबल्स, एक्सप्लेनेशंस एंड केस लॉस. सी, सो मेनी थिंग्स वी हैव कवर्ड हियर. अ क्विक एंड इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ओके, आप जैसे जैसे उसको पढ़ोगे आपका एक रिवीजन और हो जाएगा. अभी मैं आपको बताऊंगी कितना स्टडी मटेरियल का कितनी बारी रिवाइज करना है. तो दिस इज ऑल्सो वन टाइम रिवीजन ऑफ द स्टडी मटेरियल. हेल्पिंग स्टूडेंट ग्रास्प एंड रिटेन इंफॉर्मेशन एफर्टलेसली. जब आप किसी चीज को डायग्राम में पढ़ते हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाता है. हम भी तो नोट्स बनाते हैं ना, तो हम उसको डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं लिखने से बेटर. तो सारांश पढ़ के आपको वो कॉन्सेप्ट, जैसे ही आप स्टडी मटेरियल से वो चैप्टर कंप्लीट करोगे, या तो बिफोर दैट और आफ्टर दैट, just complete, just read the same topic from Saransh also. It will be very beneficial for you. So first LBC, second study material, third Saransh. Yes.
रिविजनरी टेस्ट पेपर्स हमारे भी सितंबर के लिए बनेंगे एंड इट विल बी रिलीज. गेट एन इनसाइट ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर द फोर्थ कमिंग. अभी ये आरटीपी होती क्या है? आरटीपी में वी विल प्रोवाइड यू around 20 to 25 questions for practice. Once you are finished with your study material, now you just attempt the questions given in the RTP. Okay, revisionary purpose के लिए. So आपको अपना लेवल पता चलेगा कि at which level you are at which level. अभी आपको मेहनत तो देखो हमेशा सबको करनी पड़ती है. There is always scope for improvement. ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस की कहीं पता चला आपने आरटीपी पढ़ी एंड you're not able to solve the questions, so you have to do a lot of more hard work. So preparedness for the forthcoming examination. To update on the latest development, sometimes law is such a paper that amendments are also there. We have covered, if there are some amendments for January 2026, we will cover the same in the RTP. So along with the study material, you can refer the same. To enhance the confidence level, we will provide you 20 to 25 questions. So once you do the questions, your confidence level will increase. And in the under the website, you will see that around 4 to 5 RTPs are available. If 25 questions are available in one RTP, so you can imagine that around 100 to 125 questions are already available in RTPs. So we have to do a lot of practice. All this thing we do through the, all this content is available on the website. You just have to open the website and see. I will just share the website also. I will make you aware about the same. Just give me some seconds, some minutes. Model test papers and model test booklet, model test papers and mock test papers. Yes, model test papers हमने, I told you that 10 sample papers, 10 model test papers, the same format, the same type of questions covered, which come in the examinations are covered. We have covered in the model test papers. 10 model test paper and 2 mock test papers here. Time management. सबसे पहले self assessment. When you will do these booklets now, you will assess yourself because answers are available also. So once finish with this, just open the answers given by the BUS. You can assess at your own. I told you in advance now, there is only one person who can help you. Who is that person? That person is you. You are the judge of your own. You can analyze the things better instead of asking your friends or your someone else. You can analyze, you can pinpoint your mistakes easily. So self-assessment. One thing, जब आप पेपर करोगे, when you are attempting this paper, the paper is of 3 hours and you had to attempt any 5. Yes, you have to attempt any 5 questions, but in the 6 questions are covered, but whenever you are trying to these booklets, cover all the questions. On time 3.5, no, in the same 3 hours. इससे क्या होगा, जब आप 6 क्वेश्चन, हमें 3 hours किसके लिए मिलते हैं? For 5 questions, but try to cover all the 6 questions in this 3 hours only, because इससे क्या होगा, your time management will be, you will know an idea that how much time you are doing on this paper, and by increasing your speed, you have to manage the time also. Okay, like in the board na, हम भी यही करते थे. Whenever we are doing our professional course, 3 hours का paper, we try to solve the same in 2.5 hours, because जब आप घर पे इसको कम टाइम पे करोगे तो आपको एग्जामिनेशन में जब जाते हो तो एग्जामिनेशन कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं. सो आपको एग्जामिनेशंस में थोड़ा और टाइम लगता है. तो इसीलिए whenever you are trying to solve the paper, so आप instead of 5 questions attempt 6 questions within the same time. तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, increases the speed. एंड आप एक क्वेश्चन छोड़ के चले गए, सबके आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया कि नहीं, क्वेश्चन पेपर पे लिखा है 5 ही करने हैं,
बाई चांस जो क्वेश्चन छोड़ा आपका वही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कम इन योर एग्जामिनेशन, सो व्हाई हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, ओके, एट होम, नॉट आउट द एग्जामिनेशन. एग्जाम सिमुलेशन, यू विल गेट एन आइडिया. ये इसी से एग्जाम सिमुलेशन मींस इंक्रीजिंग द स्पीड. आपको एक आइडिया लगेगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर एग्जामिनेशंस, हाउ टू राइट द आंसर्स, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स. Conceptual clarity, obviously whenever you are reading the, you are practicing the questions, है ना, you are writing the answers, your concepts will be cleared. Why? कैसे? जब आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे many times, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, इट्स नॉट ए वैसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि ये इसमें से नहीं हुई तो नहीं हुई. आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आफ्टर फिनिशिंग द क्वेश्चन पेपर, कि इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट. तो कॉन्सेप्ट विल बी क्लैरिफाइड. Okay, and जब आप you will compare the answers given by you with the answers provided by this. You are reading the answers, so how many questions you read, the better the concepts will be clarified. आंसर प्रेजेंटेशन, ये तो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है ही. सबसे बड़ा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, द मेन फोकस ऑफ अवर पेपर इज प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स. तो जितने क्वेश्चंस आप करोगे, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर डूइंग, this will increase, this will improve the presentation of answers, because you are reading the answers provided by ICAI, so automatically you are doing the practice in the LVC class also, you are doing the questions in the study material also, you are doing the questions of RTP also, so many publications you are doing, so automatically your presentation will improve. Error correction, obviously when you are doing the questions and you are checking at your own, errors भी होंगी, ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 100 मिल जाएंगे. 100 में से 100 हमें मिलेंगे कहाँ, इन द एग्जामिनेशंस, बट घर पे एरर्स भी होंगी. अगर एरर्स नहीं है तो दैट मीन्स यू आर चीटिंग. आपने पहले से ही आंसर्स देख लिए हैं. आंसर्स नहीं देखने, आंसर्स कब देखने हैं, आफ्टर फिनिशिंग योर पेपर. एरर्स निकलेंगी, अच्छी बात है, एरर्स निकलेंगी. जो एरर आपने एक बारी करके रेक्टिफाई कर ली, keep this thing in mind, that error you will not repeat in your examination. Okay, exposure to question variety, since you can see that RTP में around, I told you, around 100 to 125 questions. Okay, then in the model test paper, in each paper around 20 questions are covered, so 20 multiplied by 22, how many questions are there? Around 440. So see the variety of questions. So many, sorry, it's 12. 240. Okay? Around 200 to 240 questions in this. So कितने variety के questions आपको मिलेंगे? और पेपर में भी तो यही सब variety आएंगी. Build confidence. Yes, आप जैसे जैसे पेपर करोगे, अब कोई बच्चा ऐसे स्टडी मटेरियल पढ़ के चला गया पेपर में, और क्वेश्चन पेपर देखा उसने, अरे ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये तो मैंने करे ही नहीं. और आप जाओगे एलवीसी क्लास करके, यू विल डू गो आफ्टर अटेंडिंग ऑल द क्लासेस, आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस, आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन भी मैंने करा है, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आई हैव डन, ये क्वेश्चन मैंने करा है. इजी, आराम, बहुत इजीली यू विल क्रैक. ओके, yes, suggested answers. I will take 5 minutes queries, because so many queries I am receiving. Then we will start. जो query I have already undertaken, I will not repeat your name. Okay? Ma'am, how we can make a note while running the class or after the class is over, and where we get the notes? I told you that these all notes are available on the BUS Knowledge Portal. Yes. Rini is asking, मैम हमारे बिजनेस
अच्छा गया था 60 मार्क्स का, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स में फेल, सबसे ज्यादा इको एंड मैथ्स। बेटा आई थिंक यू हैव गिवन इन अर्लियर अटेम्प्ट्स आल्सो रिनी, कोई बात नहीं, अब जिस सब्जेक्ट्स में आप रह गए उसको आप दोबारा से मेहनत करो, ओके। डू नॉट लीव अ होप, यस, बट जनवरी 2026 में वी हैव टू क्लियर। Please share the email ID in chat box, ma'am. Email ID, this, yes, there is a BOS knowledge portal. Okay, and BOS mobile app, I will come to that also. BOS mobile app, pe just download the BOS mobile app. There is a portal, ask your query. Just share your concerns with that portal. Ma'am, you are explaining very clearly. Everything is crystal clear. Thank you, Ujjwal. Sakshi is writing, ma'am, I have appeared in September examination but paper was not going well. कोई बात नहीं बेटा, अब आप ये स्ट्रैटेजीज आप दोबारा से एलवीसी क्लासेस अटेंड करो, स्टडी मटेरियल पढ़ो। Ma'am, I have watched recorded lecture of September 2025. Roshan is writing and completed half syllabus. So, ma'am, what should I do? बेटा रिवीजन, दोबारा से एलवीसी क्लास देखो, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा. इट इज मोस्ट बेनिफिशियल. वेरी गुड, यू हैव कंप्लीटेड द हाफ सिलेबस. जस्ट अटेंड द लाइव वर्चुअल क्लास अगेन. ओके, लाइव क्लासेस की अलग बात होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपने देख लिए, लाइव भी देखो, दोबारा देखो, योर कॉन्सेप्ट्स विल बी रिवाइज्ड अगेन. और जो आपका पीछे का रह गया है, जैसे आपने अभी हाफ सिलेबस रह गया, तो उसको भी साइमल्टेनियसली कवर करने की कोशिश करो अलोंग विद द प्रेजेंट सिलेबस. इट इज वेरी गुड दैट यू हैव कंप्लीटेड हाफ द सिलेबस. वेरी गुड. From where we can buy, Saransh? Beta, you can contact the CDS or you can take the printout also. It is available on the BUS website. How to get RTP, MTP? RTP is uploaded on the website and MTP ke liye it is already also uploaded on the website. But for MTPs and LVC, you have to register on BUS Knowledge Portal. Ma'am, can you elaborate about RTP again? RTP, beta, we will provide you around 25 questions. So after finishing the study material or after, because chapter wise हम देंगे, after finishing every chapter, you just do the questions from the RTP. And if there is some amendments in the for January 2026, we will provide the same in the RTP. Okay, Aparna. मैम मेरा भी, प्राची सिंह मैम, मेरा भी सितंबर अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया. बेटा कोई बात नहीं, बट सी द पॉजिटिव माइंडसेट. यू हैव अभी तो आपके एग्जाम्स हुए एंड यू आर ज्वाइनिंग दिस क्लास. सी द पॉजिटिविटी इन यू. ओके, कोई नहीं, नहीं गया, क्या पता आप क्लियर हो जाए, और अगर नहीं भी क्लियर होता तो वी हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशंस वंस अगेन बिफोर टाइम. You are not waiting for the result. This is the good thing. Very good. How to write case laws, ma'am? We will discuss it. First chapter has no summary. Yes, because it's very short chapter. Manoj is writing, how many attempts can we give? Beta, why you are asking? No, this is not the relevant question. We have only take this point that we have to attempt in clear the paper in first attempt. Only first attempt is there. मैम लॉ तो इजीली याद हो जाता है, पर सेक्शन नंबर याद करने में टाइम लगता है, उसके लिए कुछ हेल्प करिए. मैं इसको करूंगी बेटा. मोहम्मद, प्लीज वेट. I have covered all the your queries na in this PPT. मैम सीए फाउंडेशन के अगर एक एग्जाम में फेल हो गए और थर्ड में पास हो गए तो सिर्फ फेल्ड एग्जाम हुआ देना होगा? नहीं बेटा, सारे देने होंगे. अगर एक भी पेपर रह जाता है तो आपको सारे पेपर देने होते हैं. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जेम्पशन इन फाउंडेशन.
सम ब्रेक मैम परी। बेटा इट्स 3:20। मैंने आपका मैसेज बहुत लेट देखा। अभी मैं क्वेरीज ले रही हूँ, तो यू कैन टेक द ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स। सितंबर 2000 स्टडी मटेरियल, यस इट विल वर्क बेटा। अगस्त के बाद जो भी स्टडी मटेरियल आया है वो चलेगा। टेलीग्राफ लिंक, यस आई विल अपलोड। आर वी गेटिंग अ ब्रेक? ये आपका ब्रेक ही चल रहा है। आई कांट ज्वाइन जूम मीटिंग फ्रॉम ऐप एंड नेवर यूज वेबसाइट बिफोर। ओके बेटा, मैं अभी आपको वेबसाइट का भी बताती हूँ। आई हैव रीड चैप्टर 1 in last 2 days. Very good, Dhruv. I will ask you questions in the Monday class. Okay, Dhruv, please be ready. We will solve some questions. मैम हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे आप बता दो कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। बेटा ये जो सब चीजें हैं वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं आपकी। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वही आप हिंदी मीडियम के लिए आप उसको कीजिए। द सेम स्ट्रैटेजी विल फॉलो फॉर हिंदी मीडियम ऑल्सो। एलवीसी लिंक, एलवीसी लिंक के लिए बेटा आपको बीयूएस नॉलेज पोर्टल पे करना होगा, क्लिक करना होगा। यस, स्टडी मटेरियल इज इनफ बट ऑल द पब्लिकेशंस फॉर प्रैक्टिस। यस, जो मैंने आपको अभी बताई वेटेज, दैट विल बी सेम फॉर जनवरी 26 एंड May 26. Ma'am, I have covered my 30% of syllabus from some coaching, but the batch is expired. So can I attend these classes? Yes, beta, most welcome. You can attend these classes. No, there is no WhatsApp group. No negative marking in paper 1 and paper 2. We have to prepare along with you or after the class. In the class, just listen to us, whatever we are teaching, and after the class is over, you can prepare. Okay, almost all the queries we have resolved. Yes. Now we will coming back to our this slide. Suggested answers. Suggested answers, I told that this is the publication of ICAI where the last question papers, last attempt question papers along with their answers are covered. Okay. So guidance from ICAI. The answers are prepared by ICAI, the Board of Studies. So you will get an idea that what kind of answers, in which type, what is the format of writing the answers. So you will get an idea from ICAI. Improve answer presentation skills. मैंने बताया आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे your answers will be improved. Understand examiners expectations. इसके अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि what are the comments of examiners, कि जब एग्जामिनर्स के पास जाते तो उनको क्या लगा कि किस क्वेश्चन में बच्चे ने, किस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चा कम एफर्ट कर पाया। तो इससे आपको एग्जामिनर कमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। ओके, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो आप देख सकते हो। बेंचमार्क फॉर सेल्फ इवेल्युएशन, आप अपने आंसर्स, यू कैन चेक योर आंसर्स विद द आंसर्स प्रोवाइडेड बाय आईसीआई। इनहांसेस टाइम मैनेजमेंट, मैंने आपको बोला सजेस्टेड आंसर्स भी आप कीजिए 2.5 आवर्स में कीजिए, तो क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट। यूजफुल फॉर रिवीजन, यस ऑल द टॉपिक्स, बिकॉज सजेस्टेड आंसर्स में आपका पेपर पैटर्न है तो आपका रिवीजन होगा। बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉम्प्लीमेंट्स एमटीपीज एंड आरटीपीज के साथ साथ सजेस्टेड आंसर भी करना है। Yes. Before this, I will just give you a click on BOS Knowledge Portal. Yes. सबसे पहले आप जाएंगे ICAI.org. Okay. Then students BOS Knowledge Portal. Click here to visit BOS Knowledge Portal. Yes. यहाँ से you can join for LVC and your MTP. Select course, registration number and date of birth. Then log in through this. Okay. So if you want to join the LVC class through Zoom or you have to do the MTP, you can join through this link. And what we offer, this
see it if you want to see the study material of foundation. Foundation का study material is here. Sorry. May 2025 एग्जाम ऑनवर्ड्स का ये आप कर लीजिए. दिस बिजनेस लॉ सेम जो मैंने आपको बताया, ऑल द चैप्टर्स आर हियर. ओके, सो लाइक दिस आई टोल्ड यू आई विल टेक अनदर चैप्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Yes, Indian Contract Act, learning outcomes, unit overview, all the topics we have covered. See examples like example 1, 2, difference in very colorful manner, in very short manner. We have covered all the things. Okay, and at the end you will see that summary. I was talking about summary. Summary is presented in the form of text and in the form of chart also. This is very, very useful for all of you. Then test your knowledge. MCQs I was talking, that MCQs are covered for concept clarity. Then descriptive questions along with their answers. Yes. Study material done. Saransh. Saransh you can refer from here. Foundation, business law. All the 4 papers are covered. Okay. So around 165 pages are available. You can refer each chapter. Then your model test papers here, foundation. This is the combined file of all the 4 papers. First to 10 papers of accounting, 1 to 10 papers of business law, then QT, then economics. Then answers are available at the separate place. Revision test papers अभी आपका January 2026 का not available, but you can refer meanwhile after finishing the study material chapters. September, June, May 25, January 25, May 24. See, around 5 to 6 RTPs are available already. So around 100 questions तो आपके RTP में ही covered है. Suggested answers. Suggested answer अभी September का it will released after the results. Meanwhile, you can refer all these 4 papers. Okay. Then mock test series आपका section wise weightage I have told you, but यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो. And यहाँ से from this link you can join foundation, registration number, date of birth. Okay. Yes. Now webinars and success at CA examiners. मैंने आपको बोला था starting में ही I have told you that at the end after the LVC class are over, we will do the webinars also subject specific. Okay, in this we will conduct the subject specific webinars where the topics is revised. We will do the practice and the queries. If you are having any queries, we can discuss the queries. Access to expert faculty, clarification of key concepts, revision, exam guidance and strategy. We will share practice question, doubt resolution and boost notification. Okay. हम कई बार बच्चों से पूछते हैं कि हाउ इज योर लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस. दे से कि यस बेटर, बट बेटर नहीं करनी, हमें क्या करनी है, बेस्ट, दी बेस्ट. ओके, सो हमारी प्रिपरेशंस कैसे होने चाहिए, दी बेस्ट. इस चीज के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल. एंड सक्सेस एट सीए एग्जाम. सक्सेस एट सीए एग्जाम में द BUS फैकल्टीज विल टेक 2 lectures per subject before the examinations, in which we will guide you that we will take the queries also, we will practice the questions also, MTPs we can discuss, some types of questions we will discuss, and we will tell the
students that how to face the examinations, how to utilize that hours, 3 hours for this, and 15 minutes is available for reading time. We will tell you the utilization of 15 minutes also. Resources available at, ये मैंने आपको भी बताया, I told you, BOS Live, ICAI.org. Other resources, BOS mobile app you can download in your phone through separate Google Play Store or Apple Play Stores, and you can watch the live virtual class. You can see the study material, suggested RTP, and you can raise your query through Ask Your Query. Yes, this is the very important. This is the summarization of all which we have done till today, till this time 3:30 from 2, that how to plan and prepare. Yes, attend the live virtual class. This is the synopsis of what I was teaching from 2 p.m. That attend the live virtual class. Okay, read from the study material and revised it minimum thrice and get a good grasp of the concepts and provisions. सिर्फ एक बारी पढ़ के स्टडी मटेरियल से काम नहीं चलेगा. Only once the study material is not sufficient. You have to minimum revised 3 times. Okay? Then refer Saransh simultaneously. Simultaneously कैसे कर सकते हो? After finishing the chapter. After finishing the topic also. Refer the Saransh also. Solve each and every question. हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, हमें कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना. कहाँ कहाँ गिवन है? कई बच्चे ना, पता है, बाद में जब हमारा एग्जाम्स होने वाला होता है तो बच्चे पूछते हैं, मैम फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस. मैम आपकी क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे थे. बेटा ऑल दिस इज क्वेश्चन बैंक. अभी मैंने आपको बताया आरटीपीस के अंदर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कवर्ड, अराउंड 100 to 120. सजेस्टेड मॉडल टेस्ट बुकलेट में अराउंड 200 to 240. सजेस्टेड आंसर 4 सजेस्टेड आंसर्स आर अवेलेबल. 4 मल्टीप्लाई बाय 20. एक पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं? 20. अराउंड 80 क्वेश्चंस. स्टडी मटेरियल में अराउंड 100 to 150. सो ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपको स्टार्टिंग में मैं आज ही बता रही हूँ, उसको स्टार्ट पढ़ना चालू कर दो. यू हैव वेरी लेस टाइम, 3.5 months. जिन बच्चों ने पहले स्टडी चालू कर दी है, दे आर एट बेनिफिट स्टेज. You can also be a benefit stage, but start from today also. In the starting also I told you, never start from tomorrow, start from today only. क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे कवर्ड है? स्टडी मटेरियल, आरटीपी, सजेस्टेड, मॉडल टेस्ट बुकलेट, मॉक टेस्ट पेपर्स. ओके, सो ये सब प्रैक्टिस आपको करनी है. ये स्ट्रैटेजी, हमें किसी स्टूडेंट वाज आस्किंग कि मैम मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो व्हाट स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी आप रखिए. दिस इज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी. अटेंड वेबिनार्स एंड सक्सेस सीए एग्जामिनेशन. ये आप एट द एंड एलवीसी क्लास के बाद कीजिए, हम उसमें आपको और भी टिप्स बताएंगे. अटेंड एमटीपी. एमटीपी भी आपका साथ साथ चलेगा आफ्टर फिनिशिंग द एलवीसी क्लास. देन इवेल्युएट योर आंसर्स. कौन इवेल्युएट करेगा? आप करोगे. ओके, एनी डाउट टिल दिस? यस. नाउ अभी हमने देख लिया पेपर. अब हम देखेंगे कहां से पढ़ना है. अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस. There are 2 types of questions. First is CNK and second is application. CNK based questions क्या होते हैं बेटा? CNK based questions होते हैं in which the direct provision is being asked. That what do you mean by small company? What do you mean by associate company? Okay, in what way we can perform the contract? What are the ways of discharging the contract? What is contingent contract? This direct.
इसमें आपको डायरेक्ट कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, जो याद करा है वो लिखना है। CN के बेस्ड क्वेश्चन। एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या होते हैं? इन दिस वी द क्वेश्चन पेपर द पेपर सेटर विल फ्रेम अ स्मॉल केस स्टडी, स्मॉल केस, एंड ऑन दैट बेसिस, जैसे ए ने बी को गिफ्ट बेचे, बी ने पेमेंट नहीं करी, या गुड्स ट्रांजिट में थे, पेरिश हो गए, कुछ सिचुएशंस, then on that basis you have to answer. So two types of questions आपके होते हैं, one is CNK level 1, then second is application oriented. ये हम अभी डिस्कस करेंगे, both types of questions we will take one example each, and both types of questions we will practice in our live virtual classes, both. अगर आप मेरे से इसकी पूछेंगे, both types of questions are around 50 to 60%. Weightage is very high in both the answers. तो ये आपका 40 to 60% दोनों का वेरिएशन है। ओके, सो CNK के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू रिमेंबर द प्रोविजंस, और ए के लिए भी हमें प्रोविजंस रिमेंबर करने होंगे। नाउ यू विल आस्क मी, मैम दोनों के लिए प्रोविजंस याद करने हैं तो क्या डिफरेंस है? मैं बताती हूँ अभी आपको क्या डिफरेंस है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे? रिकॉल द लीगल प्रोविजन इन्वॉल्व इन द गिवन स्टेटमेंट। जो भी आपसे सिचुएशन पूछी है उसका हमें क्या करना है? वी हैव टू रिकॉल दैट यस दिस क्वेश्चन में कौन सा लीगल प्रोविजन लगेगा, देन हमें वो लीगल प्रोविजन लिखना है, कोरिलेट द लीगल प्रोविजन एंड गिव कंक्लूजन। अगर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है तो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? लीगल प्रोविजन। इसके मार्क्स होते हैं बहुत, लीगल प्रोविजन बहुत जरूरी है याद करना और लिखना। फिर आप उसको क्या करेंगे? एनालाइज कि क्या सिचुएशन, व्हाट सिचुएशन इज गिवन इन योर क्वेश्चन एंड व्हाट इज द लीगल प्रोविजन, देन यू कैन राइट योर आंसर। सो इसके भी 6 मार्क्स में से 2 और 3 का आपका 3 to 4 मार्क्स का आपका लीगल प्रोविजन होगा, 2 का ये और 1 का आंसर। इन दिस वे, क्योंकि CA कोर्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, स्टेप वाइज मार्किंग, तो एवरी स्टेप हैज अ मार्क्स। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसके अंदर भी लीगल प्रोविजन तो याद करने ही पड़ेंगे। तो मेमोराइज करना अभी से सीख लो, मेमोराइज एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट, कि आपको पता होना चाहिए कि उसको हाउ टू अप्लाई द प्रोविजन। ओके, yes, this is the example. I will take it in a very short manner because the topic which will not, it will not be understandable. अभी आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा नहीं है, but I am taking an example that how the situation is being framed. Ayush, who is a minor, purchased 10 fancy coats for the wedding ceremony of his sister on credit from Surajwala and Sons. The cost of all cost was 80,000. Not even a single coat was a necessity. Ayush has assets of worth rupees 1 lakh. Messrs. Surajwala and Sons file a suit against Ayush for recovery of 80,000 out of his assets. Following the provisions of Indian Contracts Act, whether Ayush is liable to pay 80,000 to Surajwala. अभी इसको आप समझो मत इस क्वेश्चन को, बट कोई we have provided a situation and आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन बना दिया। Every question covers the act. आपको इसे कंफ्यूज नहीं होना, कई बारी ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ प्रोविजंस आपके सिमिलर हो जाते हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऑन दैट बेसिस व्हाट बेसिस द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। ओके, सो आंसर अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट ओनली। ये आपका कौन से क्वेश्चन है? एप्लीकेशन बेस्ड लेवल 2। सी, this is the provision. We have to write the provision mandatorily. मैंडेटरी बोल रही हूं मैं, कंपल्सरी। ये आपका ऑप्शनल है,
अगर आपको याद है, अभी वन स्टूडेंट वाज आस्किंग sections, how to remember the sections and whether it is compulsory to write. Okay, so this legal provision is mandatory. We have to write according to section 11 of the Indian Contract Act. ये आपको पूरा provision लिखना है. I'm not repeating the provision, but लीगल प्रोविजन आपको लिखना है. क्या लिखना है उसके अंदर? आपका नेम ऑफ द एक्ट जरूर होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. In case you are not remembering the section number, you can skip it. Simply write according to the Indian Contract Act. But this is must. In proper manner. ये नहीं शॉर्ट में लिख दिया ICA. No. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉमा 1872. ये आपको लिखा होगा, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है. देन इन द सेकेंड यू कैन कोरिलेट कि व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड एट द एंड यू कैन गिव द आंसर्स एंड कंक्लूड ऑल्सो. कंक्लूजन के भी लिख सकते हो आप कंक्लूजन. ओके, सो इस स्टेप, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3. तो इन दिस मैनर द मार्क्स आर एलोकेटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये देख लिया आपने, केस लॉ, केस ओरिएंट, जो आपके एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, हाउ टू डील विद दिस. वी विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्लीज. ओके, बी पेशेंट. Answering direct theoretical questions. Yes, one type of set of questions we have seen that application oriented questions. Secondly, we will deal that what are the types of direct theoretical questions. मैंने आपको बताया simple provision based होंगे, उसमें how we can present our answers. That what was the this is the way of presentation here. Now theoretical highlight heading like small company का I am taking, तो small company सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट. अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है, स्मॉल कंपनी द कंपनीज एक्ट 2013. एक्सप्लेन, उसको आप डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, हेडिंग्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ब्रेक द आंसर इन ब्रीफ पॉइंट्स और पैराग्राफ. डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिफरेंट पॉइंट्स में यू कैन गिव योर आंसर. प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है. ये नहीं कि आपने सिंगल पैराग्राफ में यू रोट द आंसर. You have to divide the answer in different bullets or different paragraphs. Yes, this is the example, direct based, KNC. What do you mean by partnership for a fixed period as per Indian Partnership Act? ये हमने बताया, partnership for a fixed period, the Indian Partnership Act. Where the provision is, ये भी मैं आपको definition नहीं बता रही, but simple definition. 2 marks का आपका क्वेश्चन है. Okay? Yes. Paper pattern. Paper pattern is entirely of 100 questions. Question number 1 is compulsory. Question number 1 आपका compulsory होता है in all the papers. Paper 1, paper 2. Attempt any 4 questions out of remaining 5. आपको ये मैंने पहले ही बता दिया, एक choice होती है, तो you can see the choice. Yes, examinations. जिस चीज के लिए हम LVC क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, दिस इज द एग्जामिनेशन. I will not take much time on this because the examination strategies we will discuss after the live virtual classes in the Success at CA examinations and BUS webinars. But I will give some time here also so that you can, from the starting also, you starting only, you can get an idea that yes, we have to divide our time, we have to adopt this strategy. Make optimum use of 15 minutes reading. आपको पेपर 145 पे मिल जाता है. ओके, 15 मिनट्स इज गिवन फॉर योर रीडिंग टाइम. सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज द यूज. हमें उसको 15 मिनट्स को ये नहीं सिर्फ रीड करके छोड़ दिया. दैट 15 मिनट्स इज वेरी क्रूशियल. कैसे? 15 मिनट्स को वी विल डिवाइड इन 2 पार्ट्स, 3 पार्ट, सॉरी. फर्स्ट 5 मिनट्स में हम क्या करेंगे? 5 मिनट्स में हमने इसको स्लॉट डिवाइड कर दिया. फर्स्ट 5 मिनट्स में वी विल रीड all the questions. 5 मिनट्स में हमें सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं. स्पीड बढ़ानी है क्वेश्चंस की, ठीक है. नेक्स्ट 5 मिनट्स आपको क्या करना है? एक जो क्वेश्चन है, देयर इज अ चॉइस. आपको विद इन 5 मिनट्स दिस हैज टू बी फिगर आउट दैट विच क्वेश्चन यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट.
लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 तो मुझे करना ही है, 2 to 6 में से आई एम नॉट हैप्पी विद द क्वेश्चन नंबर 4, मुझे उसमें थोड़ा डाउट है, I have some doubts in question number 4, so I have to figure out in that 5 minutes only that yes, I am not going to do the question number 4. इससे क्या होगा? You will not be confused. कई बार क्या होता है, बच्चे एंड तक कंफ्यूज रहते हैं, 4 करूं, 5 करूं, 3 करूं, नहीं, ये आपको तभी जज कर लेना है. देन विद इन 5 मिनट्स क्या करेंगे? हम फ्लो डिसाइड करेंगे. फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ आंसर्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन क्वेश्चन नंबर 3, सो आई विल स्टार्ट माई आंसर्स विद क्वेश्चन नंबर 3. देर इज नो रिस्ट्रिक्शन दैट ऑलवेज स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. नो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी क्वेश्चन, बट द फ्लो ऑफ द सब पार्ट, जैसे 3 कर रहे हो आप, तो 3 का ABC, इट शुड बी इन सीक्वेंस. ऐसा नहीं करना 3A करने के बाद 4B करा फिर 6C करा, नो, 3A 3B 3C, देन उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे और अच्छी तरह आता है. क्यों? हमने पढ़ा है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. अगर मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे गए तो आप समझ लो एग्जामिनर को मुझ पे फेथ हो जाएगा कि यस इसके आगे के क्वेश्चन भी सही होंगे, तो चेक करेगा और वो आपको अच्छे नंबर देगा चाहे आपके आंसर्स कम अच्छे हैं. समझ रहे हो? अंडरस्टैंडिंग? Always start with that question in which you are 100% confident. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टेज पे जाना, ये नहीं कि सबसे जो आपको कंफ्यूज है वो कर लिया, सबसे एंड में मैं अच्छा क्वेश्चन करूंगा, नहीं. यहाँ पे हमें पॉलिसी रखनी है, विच क्वेश्चन यू आर कॉन्फिडेंट 100%, स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन. इसके बाद कम वाला कम वाला कम वाला, जो सबसे कम आता है वो सबसे एंड में. Select the questions that you will be attempting from all the questions. Mark the question which you will be attempting first. एलोकेट एंड एस्टिमेटेड, ये पूरा पेपर 3 आवर्स का होता है. इसको मुझे आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर विद इन 2 hours 30 minutes. 2 hour 30 minutes का हम टारगेट रखेंगे, देन वी विल बी एबल टू कंप्लीट द पेपर इन 3 hours. अगर हम टारगेट ही 3 hours का रखेंगे तो यू विल डेफिनेटली लूज मार्क्स. ओके, यू विल डेफिनेटली लीव सम क्वेश्चंस. And 10 to 15 minutes time for revision. Write in answer in commensurate with the marks which the question arises. Answer should be precise and to the point. हमें फालतू की कहानी नहीं लिख के आनी. Which we have to be very point, relevant and to the point. Yes, some common issues. ये भी अभी जैसे students are asking. Many a time students resort to give generalized answers without capturing the extent provision. मैंने आपको भी दोनों बताए. KNC and application, that writing of legal provision is mandatory in both types of questions. So we have to write the proper provisions, we have to write the proper answers. Just writing the let yes ये केस हो सकता है, B ने C को बेचा, इसके केस में नहीं, generalized answer नहीं होनी चाहिए. You are a law student, you are giving a law paper, you are a CA student, you must know the legal provisions. Okay, you are writing the paper of law, so legal provisions are mandatory. Answer should be given in legible English language. कई बारी बच्चों की लैंग्वेज ऐसी होती है कि एग्जामिनर समझ ही नहीं पाता. ये एक कॉमन एरर आता है एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमन पॉइंट आता है कि दे आर नॉट अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर नॉट इंग्लिश लैंग्वेज, जो उसकी हैंड राइटिंग ऑल्सो. तो जो बच्चों की हैंड राइटिंग कम अच्छी है, प्लीज लिसन, इंप्रूव योर हैंड राइटिंग एंड लैंग्वेज ऑल्सो. शॉर्ट हैंड नोट्स डायग्राम्स में बी अवॉइडेड. हम अपने सीए के पेपर में डायग्राम्स नहीं बना सकते. ओके, यस. अवॉइड यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स. व्हाट्सएप, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है तो बच्चे लिखते हैं YOU को U, IM को M, है ना. तो these short forms are not allowed in the examination. If abbreviations are used, like for example you are using abbreviation of memorandum of association, abhi recently a question came in the September 2025, what is MOA, what is articles of association memorandum. So once you have written the memorandum of association, within the brackets just write MOA, then you can use the MOA abbreviation.
But in the starting, you have to specify the paper checker. आपको answers में लिखना है कि what the MOA means. Learning section numbers. Read and revise. अभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैम हाउ टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स. देखा सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो गई 90%. रीड एंड रिवाइज. जितना as much you reading the study material, okay, the automatically the content, the sections, the explanation, it will automatically imbibe in your mind. There is not to fear, not to worry about this कि yes मुझे कैसे याद होंगे, क्या करूं मैं भूल रहा हूं. नहीं, जितना आप पढ़ोगे उसको इट विल ऑटोमेटिकली बी इम्बाइड. हम जब जैसे पढ़ते हैं ना, पेपर देने जाते हैं, तो ये सबके मन में फियर रहता है कि यस मुझे याद नहीं आ रहा. बट just keep this, mark my words, that once you agar if you have studied properly, once you read the question paper, it will automatically, your hands will start moving automatically, अपने आप हाथ चलेंगे. But condition is that you remember, you read everything. Okay. Yes, for queries you can ask me the queries on US mobile app query pad. Ask your query. Now we will take the queries. I think all the queries of you have resolved, because I have tried to cover each and every point related to examinations. Okay, so I'm if any query you are think that it is not covered, just ask me. How many sessions for Indian Contract Act? Beta, around 11 to 12 sessions are available. Just go through the schedule. Are you going to take the chapter 1 as well? Yes, I will take the chapter 1 also on Monday. For C and K based question, rote learning should be there, or we can write in your own way. Yes, this is very good question, Ujjwal. Own language. देखो, आपकी लैंग्वेज आप कैसे भी लिखो, बट योर लैंग्वेज शुड बी लीगल. लीगल लैंग्वेज क्या होती है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर डूइंग द स्मॉल कंपनी, so you have to write the section number. Section number is not mandatory. You have to write the name of the year, the Companies Act 2013. Small company, आपको provisions लिखने हैं small company का, तो you will write that this is not the small company first. Then the paid up share capital should not exceed 4 crores and in the immediately preceding financial year, and turnover should not exceed 40 crores in the immediately preceding financial years, and the provisions of small companies not applicable on 3 types of company. Small companies के लिए आप 3 type of companies पे applicable नहीं होता: holding, subsidiary and joint ventures, and some companies are also there. So this is the legal language I have spoken. I'm telling you in my own language, but if you will see the definition of small company in the act, it will be minutely different. But what I spoke here, it's the legal language in my own words. So legal language क्या होती है? आपका नाम सही आना चाहिए, नेम ऑफ द एक्ट. प्राइवेट कंपनी नॉट, ये नहीं लिख सकते कि स्मॉल कंपनी is a private company, is a private company, but आप ये मत लिखो कि small company is a public company. No, ये आपका प्रोविजन गलत हो जाएगा. आप लिखिए small company क्या होती है? is a private company. paid up capital एंड की जगह आपने अगर और लिख दिया, अगर आप पढ़ोगे स्मॉल कंपनी का, तो उसमें लिखा है पेड अप एंड टर्नओवर बोथ. अगर आपने और लिख दिया तो भी आपका गलत हो जाएगा. तो इस तरह से यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, but that language should be legal. Okay, Ujjwal? Saturday and Sunday, what we can do? What we can do? Just start, read the chapter 1 and chapter 2. Start. देखो, see, so many students have completed the half syllabus. Okay? Do not waste a single day. Ma'am, we can use Saransh from the day 1 or from day 1 along with the study material. But once finish the chapter from the study material, then refer the Saransh.
लीगल प्रोविजन क्या होता है? महक जैन, लीगल प्रोविजन बेटा ये होता है कि आपका जो सेक्शंस हैं उसके अंदर प्रोविजन क्या कहता है। जैसे मैंने आपको स्मॉल कंपनी का बताया है ना, 2 सबसेक्शन 85 क्या कहता है स्मॉल कंपनी के बारे में, तो ये आपका लीगल प्रोविजन है जो आपके एक्ट्स में लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में, वेदर इट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेदर इट इज सोगा, पार्टनरशिप और एलएलपी कंपनीज। प्रोविजन लिख के आना है आपको। सीडीएस में करिए बेटा, बहुत सारी बुक्स आ रही हैं जिसकी बुक से रिलेटेड क्वेरीज है। मैम इवेंट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं बेटा, मुझे समझ नहीं आया क्या। एमटीपी एवरी क्लास के बाद करनी है? एमटीपी एवरी क्लास के बाद नहीं, आप ये सारी क्लासेस जब खत्म हो जाएंगी तो आपकी एमटीपी स्टार्ट होगी। तब तक मीनवाइल यू कैन डू द स्टडी मटेरियल। सारांश, आरटीपी सजेस्टेड। मैम सेक्शन नंबर मेंशन करने के भी मार्क्स होते हैं? नहीं, बट सेक्शन के मार्क्स नहीं होते, बट इट मेक्स द गुड इम्प्रेशन कि हाँ बच्चे को लीगल नॉलेज है। ओके। Saransh, books are compulsory to read. Beta, I told in advance that this strategy is optional for all of you. Who want to take, they can refer. According to me, I have given my opinion. Okay? You can decide on your own. I told you that you are the judge of your own. But if you refer Saransh, it is beneficial. Ma'am, how many months to complete syllabus? Please tell me, ma'am. In October? No, beta. अभी तो सितंबर में हुई है, तो the classes will be completed by December, starting first week of December. How many page book have to keep? Study material. Study material तो सारा पढ़ना है. Please repeat the case study answer writing. अभी मैंने आपको बताया case law writing के लिए first step you have to write the legal provision. Second, analysis, and third paragraph में you have to write the answer. Okay, Gaurang. Any other book to be used for law preparation other than ICAI study material? Beta, ICAI study material is self-sufficient along with the other publications which I told you. If we include the section number, is it possible to get extra marks? No, no extra marks for section number. Handwriting and presentation matters. Yes, Amruta, it matters. Mock test कब से start होंगे? After 5 December. Can we write wrong section number? Yes. This is a very important question. आपके अगर इफ यू आर राइटिंग द रॉन्ग सेक्शन नंबर देन मार्क्स विल बी डिडक्टेड बाय, बिकॉज एग्जामिनर को लगेगा कि यस इसको प्रोविजन नहीं आता, तो अवॉइड कोटिंग रॉन्ग सेक्शन नंबर. यू कैन डायरेक्टली write that as per the provisions of the LLP Act 2008. Do not quote a wrong section number. I am repeating again. सारांश का क्या मतलब होता है? सारांश का बेटा हमने शॉर्ट फॉर्म में एक डायग्राम्स बना रखा है, कैप्सूल्स कह सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट. मैम बिजनेस लॉ में पास होना ओके, पर अच्छा स्कोर कैसे करें? दैट मीन्स कि 95 प्लस, बिकॉज एवरीवन से कि बिजनेस लॉ इज हार्ड, बट आई नो बिजनेस लॉ इज हार्ड पर मजा आता है पढ़ने में. वेरी गुड अंश. बिजनेस लॉ में अगर आप मानोगे तो मेरे आई हैव रिकॉर्ड्स ऑफ मे 2025, सो मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 85 नंबर्स, 85 मार्क्स. 80 to 85 तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हैं. Okay, so business law is not hard. Just follow the strategy which I have shared with you all today. मेहनत आपको करनी पड़ेगी. मैम मेरे डेस्कटॉप पर जूम एलवीसी क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है, कुछ सिग्नेचर इज इनवैलिड बता रहे बेटा. आफ्टर द क्लास जस्ट कॉल ऑन अजीत नंबर. व्हाट इज दिस? चलो प्लीज जो आप एक इस पे देखिए, कोई ऑल द स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन थ्रू जूम. तो इसके बाद अगर आपका नहीं हो पाता मंडे की क्लास, या अभी टुमारो ऑल्सो वी आर हैविंग पेपर 3 एंड पेपर 4, आप अगेन ट्राई कीजिए. स्टडी मटेरियल आर ऑफ इनफ? यस, स्टडी मटेरियल इज इनफ along with the practice.
मैम हमको कितनी नोटबुक बनानी पड़ेगी? 1 2 प्लीज बेटा, राइटिंग के लिए तो नोटबुक्स की कोई लिमिट ही नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए 1 से। यस, 3876 859 अजीत है यहाँ पे। आप यू कैन, इफ देर इज एनी टेक्निकल सपोर्ट यू वांट, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। मैम लॉ में, अगर लॉ में 30 नंबर आ रहे हैं तो क्या उसमें बोनस मार्किंग होगी क्या? नहीं बेटा, बोनस मार्किंग क्यों होगी? यू विल गेट, यू शुड गेट द मिन 30 का स्कोर मत रखिए, आप अपना 80 का एक्सपेक्टेशन रखिए, देन आपके 50 मार्क्स आएंगे। ओके, can we write your answers in pointers rather than paragraphs? Yes, you can write your answers in bullets and different paragraphs or pointers also. हाउ टू रिमेंबर सेक्शंस, ये मैंने आपको बताया। सेक्शंस को रिमेंबर करने के लिए यू हैव टू रीड रीड रीड। आंसर में सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है। यस, आंसर में सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको याद है तो आप लिख दीजिए, नहीं याद तो मत लिखिए। इस डिफरेंस आरटीपी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरटीपी एमटीपी एंड सजेस्टेड? बेटा आरटीपी में 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एमटीपी क्या होता है? एमटीपी आपका एक तरीके से सैंपल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, लाइक द एग्जामिनेशन फॉर्मेट। 6 क्वेश्चंस, 1 कंपल्सरी, 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन। एंड सजेस्टेड आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स along with the answers. हाउ कैन आई गेट 80 प्लस नंबर? बेटा यू कैन इजीली, अभी मैंने आपको बताया, मई 2025 में so many students have scored more than 80 marks. Okay, just follow the strategies shared by LVC faculties and us. Enjoyed your class a lot, ma'am. Thank you for your support. Thank you, Amrita. Next class कब होगा? Business law का next class is on Monday. Today recorded lecture कहाँ पे available है बेटा? It is available in US Knowledge Portal also and available on CA Tube, YouTube. Thank you, ma'am. Ma'am, we have to write introduction and conclusion for answer. Introduction नहीं बेटा, legal provision लिखना है आपको, and some brief of the case study, कि क्या case study में लिखा है उसके according आपको आंसर लिखना है। मैम आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाओगे बिफोर एग्जाम्स? बिफोर एग्जाम्स नहीं, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। अभी भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं। ओके, सो इन एवरी एलबीसी क्लास वी विल कंडक्ट सो मेनी क्वेश्चंस। आपको पढ़ना है और उसको बाद में अपने आप भी करने हैं। थैंक यू मैम, बेस्ट गाइडेंस। थैंक यू त्रिलोक, थैंक यू सो मच प्रांशु। ओके, नाउ सम स्टूडेंट्स हैव रेज देयर हैंड्स। अर्जुन, प्लीज Yes, अनम्यूट ma'am. योरसेल्फ। यस, Yes, ma'am. I have given the September 25 examinations. I have come across the paper to business law question paper. The question paper was moderate to hard level, but I cannot pass in that question paper because Indian partnership did not go well, and ओके along with Indian contractor. So basically mainly Indian partnership. So what to do with that chapter? बेटा जस्ट अटेंड द एलवीसी क्लास, है ना? एंड आपने, यू हैव कंप्लीटेड, सिंस यू हैव गिवन इन सितंबर 2025, almost all your syllabus is completed till now. Okay, I'm assuming this all Yes, the ma'am. syllabus is complete. Yes, just focus more on the Indian Partnership Act. Meanwhile, you can see the recorded lecture of Indian Partnership Act which has taken by Harleen Kaur. Just read, attend the LVC class and read from the study material and do lot of practice of the questions. आपने practice किया था जो
कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस किया था? व्हाट स्ट्रैटेजी यू हैव फॉलोड? No, ma'am, I did not go well with partnership act, so I did not cope up with that chapter. अच्छा, इन द बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशंस यू वर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द पार्टनरशिप. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, सी, you are telling the answer yourself because your preparation was not good, है ना? बट देखो अर्जुन, अभी जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू आर टेलिंग योर पार्टनरशिप इज लिटिल बिट वीक, बट ये 3 to 2 point जो भी टाइम है, जस्ट डू नॉट फोकस ओनली ऑन द पार्टनरशिप, फोकस ऑन ऑल. Your focus can be more on Indian Partnership Act, but that does not mean you will skip all other chapters. Yes, ma'am. Okay, so keep Yes. a balanced approach between all the chapters. Just keep all the practice part, which I have told you today's session, but 10% extra you can make an effort on Indian Partnership Act. Okay, ma'am. Okay, Thank you, ma'am. don't Yes. worry, just follow the LVC classes, just interact with us on daily basis. We will be there in LVC class. Every LVC class, we will also be there with LVC faculties. If you are having any doubt, you can contact us. Okay, Okay, ma'am. Arjun? Yes. Okay, all the Thank you, best. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Anjana. Anjana, please turn up. Jay Anmol Agrawal. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. मैम, मेरा क्वेश्चन था कि मैंने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो कंप्लीट कर लिया था Hmm. एंड मैंने मतलब कंपनी से कंप्लीट किया था, लेकिन स्टडी मटेरियल से लाइन बाय लाइन लर्न नहीं हो पा रहा था. तो बस लीगल प्रोविजन एग्जाम में लिखना है या इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लाइन बाय लाइन लर्न? नहीं, लाइन बाय लाइन मैंने आपको बोला ना, आपको लाइन बाय लाइन ही, आपको अभी उसको समझने की जरूरत है. आपने कितनी बारी पढ़ लिया कंपनीज एक्ट चैप्टर स्टडी कंपनी मटेरियल? से वन वन टाइम्स में कंप्लीट हुआ है. हाँ, तो अभी आप उसको एक बारी पढ़ के वो समझ में नहीं आएगा, आपको उसको 2 बारी 3 बारी पढ़ोगे, तब ऑटोमेटिकली वो आपको याद हो जाएगा. और उसके साथ साथ आप एलवीसी क्लास भी अटेंड करना हमारी. यस मैम. ठीक है, मैं मानती हूँ यस कि मैम. एक बारी पढ़ने पे आपको, जब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एबीसीडी भी उनको एक बारी पढ़ने पे नहीं होता, हम उसको बार बार रिपीट कराते हैं. तो ऐसे ही आपको एवरी स्टडी मटेरियल, एवरी चैप्टर यू हैव टू रीड 2-3 times मिनिमम, एंड आफ्टर दैट 2-3 times रिवीजन. ओके मैम. ओके, ऑल द बेस्ट. यस मैम. थैंक यू मैम. ओके, उज्जवल मोहम्मद, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस उज्जवल. Hello, ma'am. Am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल. मैम, मैं जनवरी 2026 का एग्जाम देने वाला हूँ. जनवरी तो 2026. ओके. तो उसके लिए मैम ये सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर, एमटीपीज, आरटीपीज, ये सब करने से होगा? मैंने हाफ ऑफ सिलेबस अक्टूबर 2025 का अटेंड किया था. क्या कह रहे हो आप? 2025? 2025 का जो लेक्चर्स था ना, मैंने देखा था जूम पर. तो सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर, एमटीपीज, आरटीपीज, ये सब करने से होगा? हाँ हाँ, डेफिनेटली होगा, अलॉन्ग विद द स्टडी मटेरियल. जो मैंने आज आपको बताया उसको आप करिए अच्छी तरह. सारी चीजें पढ़नी है, एक भी चीज नहीं छोड़नी. हार्डवर्क आपको करना है, रिजल्ट आपका डेफिनेटली आएगा. ओके, थैंक यू. ओके, ऑल द बेस्ट. अंश, अंश, आर यू देयर? यस यस मैम. यस, टेल मी. मैम, मुझे और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में. बिजनेस लॉ के मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं सर के, क्या देखे? और अच्छे से वीडियो. समझ भी आ रहे हैं. हम्म. वीडियोस, बिजनेस लॉ के मैंने वीडियोस देखे हैं. लगभग मेरा दूसरा चैप्टर जो है वो पूरा होने को है, पर मैं ओके. वापस से अभी स्टार्ट करूंगा क्योंकि ओके. अब तो न्यू वीडियोस आ रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम मैम ये है कि मुझे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, हिंदी में समझ भी आ रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे इंग्लिश में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी. वो थोड़ा सा एक फियर है मन में बस. अच्छा, आपको इंग्लिश में पेपर देना है? हाँ हाँ, इंग्लिश में, क्योंकि मैम हिंदी में तो मुझे पता है, हिंदी में तो मैं इजीली पास कर लूंगा. और हिंदी में, क्योंकि आप हिंदी में मेरा थोड़ा ठीक हूँ मैं इसके लिए. आप स्टडी मटेरियल कौन सा रेफर कर रहे हो, और हिंदी मुझे इंग्लिश इंग्लिश? में देना है.
स्टडी नहीं नहीं मटेरियल मैम, इंग्लिश ही कर रहा हूँ, इंग्लिश में मुझे करना ही है। हाँ तो बस इंग्लिश ही है मैम। अब आप अपने आप को इंग्लिश मीडियम बोलिए, हिंदी का नाम नहीं लेना हमें। हमने कोई भी ऐसी इंग्लिश टफ ओके इंग्लिश ओके। यूज नहीं कर रखी अपने स्टडी मटेरियल में, अपने लेक्चर्स में, जो आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट को समझ में नहीं आए। हाँ हाँ ठीक है, तो जितनी आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम क्या हाँ करते हो, हाँ जितनी हाँ। आप अपने आपस में जितना उसको रीड करोगे ना, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है हमारी स्टडी की, वो थोड़ी बेसिक जी। लैंग्वेज होती है जैसे हमारी, तो इतनी हाई फाई इंग्लिश में नहीं है। आप उसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल, आप उसको आंसर्स को लिख कर आ पाओगे पेपर में। और क्वेश्चन पेपर में साथ ओके में अगर ओके आप ओके। देखोगे क्वेश्चन पेपर, तो इंग्लिश के साथ हिंदी भी होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता इंग्लिश में, तो आप उसका हिंदी मीडियम हाँ पढ़ सकते हो, जी जी। है ना, तो कोई दिक्कत नहीं हाँ आएगी। हाँ हाँ, आप लेक्चर समझ गया स्टडी मैम। समझ गए, चलो, वेरी गुड अंश। जी जी जी। यस, थैंक अंजना, यू। आर यू हेलो देयर? मैम। हेलो यस मैम। अंजना, अंजना टेल मी। मैम वो कंफ्यूजन हो रहा था आंसर कैसे लिखे। मैंने आपको भी बताया दोनों तरह के आंसर्स। हाँ मैम। हाँ, क्या कंफ्यूजन है बेटा उसमें? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखना है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बेटा, आपकी छोटी सी केस स्टडी पूछी जाएगी, ठीक है, तो आपको उसमें सबसे पहले आप जब व्हेन यू विल, आप उसको, मैं आपको हिंदी में बताऊं इंग्लिश में बताऊं? हाँ मैम, हिंदी में बताइए। जब आप उसका क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एक बारी पता चल जाएगा कि आपको कौन सा लीगल प्रोविजन के ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो आपका हाँ उसका लीगल प्रोविजन लिखना है, दैट एज पर, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है एसोसिएट कंपनी का, कंपनीज एक्ट के अंदर कोई एसोसिएट कंपनी के ऊपर आ जाता है, तो मैं उसको हाँ लिखूंगी, आपको पूछा उसमें साफ साफ लिखा होगा कि बताओ ये कंपनी एसोसिएट कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट, तो आपको पता चल जाएगा। नहीं पता चलता तो आपको अपना, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड कि यस ये एसोसिएट कंपनी का एग्जांपल है, तो यू विल राइट दैट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एसोसिएट कंपनी का प्रोविजन क्या कहता है। हाँ ओके, यू विल राइट, हमें पूरा लिखना है उसमें प्रॉपर, ये नहीं शॉर्ट में लिख के आ गए, पूरा प्रोविजन के मार्क्स होते हैं। अगर 6 नंबर का है तो आप एसोसिएट कंपनी का लिखिए, 3 नंबर 2 3 मार्क्स आपके प्रोविजन के होंगे। हाँ। वो उसके सेक्शन बाद में सेक्शन अगर आपको याद है तो आप लिखिए 2 सब क्लॉज 6। नहीं तो वो मार्क्स नहीं कटेंगे ना मैम। नहीं कटेंगे आप, मैंने आपको इसलिए आंसर बताया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 जरूर लिखना है। मैम वो आंसर के लिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना है। इंट्रोडक्शन को क्या होता है बेटा? इंट्रोडक्शन में समझी नहीं, आपने पहले भी पूछा था। हाँ नहीं, वो क्वेश्चन जो पूछे जाते मैं, हैं आप उसके। पहले मेरी बात सुनिए, पहले आप लीगल प्रोविजन लिखेंगे, हाँ ठीक है, उसके बाद जब आप लीगल प्रोविजन खत्म कर देंगे तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि जैसे ए कंपनी की इतनी पेड अप कैपिटल इज होल्डिंग, ए ने इतनी होल्डिंग बी में कर रखी है, यही आपका एसोसिएट कंपनी का होता है कॉन्सेप्ट, कि किसी ने हाँ होल्ड कर रखा है तो हमें बतानी है, तो आप उसमें लिखोगे कि ए ने इतना होल्ड कर रखा है, तो ऑन दैट बेसिस अब आप ये बताओगे, प्रोविजन से उसको मिंगल डाउन करोगे, मिक्स करोगे, फिर आप अपना आंसर लिख दोगे। हाँ मैम, वो कंक्लूजन वो लिखने का जरूरत नहीं है। कंक्लूजन कह लो, आंसर कह लो, यही बात है। हाँ मैम ठीक। ठीक है, हाँ मैम ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। सरला देवी, Hi, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, I just wanted to know, like, already given the attempt in the month of September. Yes, I remember you. Yeah. Then, yeah, I've done not so good actually Okay. because I didn't practice properly. I was know the provisions, everything. Because of the time limit, I'm not able to manage that time where I find the difficult there. So Okay. now, You have anyway, I have yeah, told अभी मैंने आपको I have briefed about the time management that that's as what many sample. is. Yes, tell me. I couldn't, like, I know all the answers. The thing is, I'm not able to write, fastly to cover the 3 hours where I felt, Okay. Okay. I put a lot of. How you practiced at home before the examination? What strategy do you follow? So normally what happened, I started to write all the provisions, like all alphabetical What wise. publications have you attempted? MTPs, model test booklet, No, these no, no, all. no. Hmm? MTP is done, practice I've done, but not that much of practice I couldn't done because of the time shortage. Because I have taken only 4 months. I've taken the enrollment in the month of June. Hardly had some 3 months, that's all. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा, अगर आपको जैसे राइटिंग प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता तो यू कैन रीड द आंसर्स। ओके, आप यू कैन जस्ट डिवोट योर टाइम इन रीडिंग द आंसर्स।
Okay, but minimum one sample paper you have to attempt in last 15 days, 15 sample papers minimum. Okay. ये आपको strategy रखनी पड़ेगी after completing you have completed the syllabus already, so you can start practicing from today. Like 4-5 suggested answers. MTPs भी, I'm not telling that December का करो. So many MTPs are available already. So start Okay. doing that. This will definitely help you. Sure, Okay. ma'am, sure. Okay. Along with the study material, do not forget the study material. You do not think that I have completed the study material. Just read it thoroughly again. But Okay. practice from today. Though the students which are newcomers, okay, which are reading, unke liye I can tell them that practice part they can do later. But since you have completed the syllabus, just revision and practice will go simultaneously. Sure, sure. And Okay. second thing, that for the 3 marks and the 4 marks and for the 6 and 7 marks, how to write that answer, what, how much length, what kind of answers examiners expect. Here, for example, 3 marks. The same question used to come even for 7 marks also. No, Like, that's not the case. Agar if there is a question of 6 to 7 marks, there will be minimum 2-3 subparts. If you will see the September 2025, I will not discuss in detail. You will see that for every 6-7 marks, the length of the question is this. Okay. Yes, ma'am. But for if the question is of 3, itna length, so that question is 3. The only one question is being asked for 3 to 4 marks. But if the question is of 7 or 6 marks, then 2 or 3 subparts will be there. You can So see the September 2025 again. But what much of answers we need to write for 3 marks, ma'am? Right? If there is a single answer, so you have to write the single provision. But Okay. if the question is of 7 marks, so three questions they have asked. 3 questions के लिए you have to write 3 provisions, difference provisions. Okay, okay. Okay? Yes, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Okay. Gaurang? यस मैम हेलो गुड आफ्टरनून मैम Good afternoon. मैम मेरा क्वेरी मतलब डाउट ये था कि मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब से ट्राई किया लॉ पढ़ने का तो फर्स्ट चैप्टर जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया ना तो वो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ना उस फर्स्ट चैप्टर का तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो उन्होंने कहा है ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये लॉ क्यों पढ़ना रहता है उसके बाद फिर हिस्ट्री था लॉ का वो हमारा भी कुछ करके था ना कोड ऑफ ऐसा करके तो वो सब तो मैम वो पैराग्राफ वो जो पूरा ऐसा हिस्ट्री रिलेटेड है टॉपिक तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हिस्ट्री के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ये सब आपकी नॉलेज के लिए है कि कैसे आपको भी तो पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बना कि कॉन्ट्रैक्ट आने से पहले हाउ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं हिस्ट्री के ऊपर मतलब जो भी हमारी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री दे रखी है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यस मोहम्मद हेलो मैम यस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैम ये मैं बोल रहा था कि मैं जनवरी में दिया था एग्जाम जनवरी 2025 में एंड मैं फिर अगेन दिया सितंबर में 2025 में वही वाला मैं नहीं दिया मैं मतलब कि पढ़ा नहीं मतलब प्रैक्टिस नहीं किया लॉ भी प्रैक्टिस नहीं किया अकाउंट भी प्रैक्टिस नहीं किया मैं मतलब टोटल मेरा जनवरी में 53 मार्क्स आया था ऑल मतलब सब्जेक्ट में तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं मतलब कैसे मतलब तैयारी करूँ कि मतलब देखो आपको आंसर खुद ही पता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो मैं इसका क्या आंसर दूं प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी पढ़ा हम सकते हैं प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी पढ़ना आपको पड़ेगा यू आर टेलिंग योर ओन कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया बेटा दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड विल नॉट वर्क इन सीए कोर्स दिस इज द ओनली फाउंडेशन अभी आपको इंटर में जाना है फाइनल में जाना है तो प्लीज बी सीरियस if you be a chartered accountant if you want to be a chartered accountant then you have to do a lot of hard work बिना पढ़े कोई कैसे पास हो सकता है अगेन मैं पढ़ना चाह रहा हूँ पढ़ना
चाह रहे हो तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे बेटा? जो भी आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उसको हटाओ। अभी आपका 4 to 5 years फोकस शुड बी ओनली ऑन द स्टडी, शुड बी ओनली ऑन योर सेल्फ। पहले कुछ बन जाओ, फिर आप अपने आप को कहीं पे भी एंगेज कीजिए। अभी नो बडी विल कम, कोई भी आपकी नहीं हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। मैम, ये मैं बोल रहा था कि मैं पढ़ता हूँ पर मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, उसमें नहीं लॉ तो में आपके दिक्कत फोकस आती की है। कमी है, फोकस की कमी है। आप अपना फोकस बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको थोड़ा अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि यस, ये जो आप बोल रहे हो कि मैं नहीं कर पाता, ये आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश करो ये पॉजिटिव रहने की कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे याद हो रहा है। ये मत सोचो कि मुझे याद नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा। आप ये सोचो कि मैं कर पाऊंगा, जनवरी का पेपर मुझे देना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है। ठीक है? यस मैम, मैं ये बात बोल रहा था, मैं मतलब एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा पहले मतलब पढ़ो, पेपर फिर में। टाइम मैनेजमेंट में बताऊंगी आपको। पहले आप अपना पढ़ाई करो। ठीक है, ठीक। Yes, Jen, this is the last query. The later queries I will take because almost all the queries we have undertaken. Yes, Mehak Jen. Sorry, Mehak. गुड Yes. आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम मैं अभी करंटली 12th पढ़ रही हूँ और मैं मे अटेम्प्ट देने वाली हूँ। Okay. एंड बेसिकली बाकी तीनों सब्जेक्ट्स तो हो जाते हैं बिकॉज हम स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। एंड लॉ मतलब मतलब पढ़ के ऐसे मतलब समझ तो बिल्कुल आ रहा है पूरा का पूरा, पर लिखने में कैसा लिखना है कुछ बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। कोई मतलब बात अगर नहीं, मैंने। आप हमारी क्लासेस स्टार्ट करो, आप यस हमारा मैम। स्टडी मटेरियल पढ़ना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। है ना? थोड़ा सा हाँ। टाइम दो, अभी ओके। इम्पेशेंट नहीं होना। अभी पेशेंटली हमें देखना है कि कितना मजा आएगा हमें लॉ पढ़ने में और कितना मजा आएगा हमें पेपर देने में। ओके मैम। ठीक है? थैंक थोड़ा यू। सा हाँ। टाइम दो, विद इन 10-15 days यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके मैम। ओके? थैंक यू। यस मैम। ओके। So dear students, after finishing this class there is a feedback form. It is a request that after finishing every class just fill the feedback form, because there is always the scope for improvement. Okay, once you will give the feedback we will also understand that yes, this improvement is required or this faculty is teaching in very good manner. Yeah, there are some issues with this faculty, so we can understand that some faculties are so excellent. So if the faculties are taking so much time, their time they are giving so much efforts, so it's the time for you also to give positive feedback, and if there is any negative feedback also you can fill the same. Okay, there is no hard and fast, there is no compulsory to give the positive feedback only. If anything you do not like in the class you can give the comment on according to your opinion. Okay, so yes, at the end some 2-3 lines for you. Only hard work works. समझ में आया? जितना आप हार्ड वर्क करोगे वही आपके लिए काम करेगा। ओके, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। हार्डेस्ट क्लाइंब मतलब आपका बेस्ट व्यू क्या होगा? द सीए डिग्री। सीए डिग्री के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हार्डेस्ट, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। आप अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते एक बारी, बट आपको डेली डेली बेसिस पे जो आपकी हैबिट्स हैं कि यस टुमारो कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं, जो चीज करनी है टुडे ओनली। छोटी छोटी चीजों पे, जैसे अभी किसी बच्चे ने मुझसे बात की कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, नेगेटिव आउटलुक नहीं, नेगेटिव आउटलुक नहीं रखना, पॉजिटिव आउटलुक रखना है। धीरे धीरे अपनी हैबिट्स चेंज करो, श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। अभी मैंने मोहम्मद को गाइड किया था, मोहम्मद था ये जो भी स्टूडेंट था, सॉरी आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम, बट चेंज योर हैबिट्स। if you change your habits your future will be changed definitely, but change your negative habits. पॉजिटिव जो है आपकी अच्छी आदतें हैं उनको नहीं बदलना, जो आप में खराब आदतें हैं उनको धीरे धीरे चेंज करिए। डेली पढ़ाई करनी है, डेली वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, हार्ड वर्क। ओके, नाउ दिवाली इज कमिंग, फेस्टिवल्स वी विल एंजॉय,
after giving the exams, after becoming a CA. Yes, we can devote 1 or 2 days, but ये नहीं है कि 10 days before and 10 days after Diwali you are enjoying the holidays. No, this will not work in CA course. Okay, so all the best. We will meet on Monday for chapter 1. Till then, in Saturday, Sunday, I am giving you homework. Read the chapter 1 and read the unit 1 of chapter 2, that is the Indian Contract Act. I will discuss the questions on Monday. Okay, all the best. Thank you. Yes, thank you, Ashok ji.